अंपायर इधर मौजूद ही नहीं है और टॉस अभी नहीं मोहित है ओ मोहित मोहित किस चीज़ का वेट कर रहा है यार वो बंदा Heads, umpire. Heads, tails. हेड्स Heads, tails. उन्होंने फेंकी थोड़ा ऊंचा बोले Tails, head. हेड्स Tails. What are you gonna choose? Batting first. So California won the toss and they choose to bat. कुछ करके बताना एक सेकंड थोड़ा सा आ जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सामने दोनों कैप्टन मौजूद हैं। टॉस हाँ जी, हमारे सामने दोनों कैप्टन मौजूद हैं। टॉस हो गया है और टॉस जो है कैलिफोर्निया ने जीता है और उन्होंने बैट किया है, डिसाइड किया बैट करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा पूछते हैं आप तारिक भाई, बताइएगा कि बैट आपने क्या वजह, किस वजह से डिसाइड किया? बैटिंग हम फर्स्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इनको अच्छा टारगेट सेट करके दें। इधर तो साउंड मुझे शो हो रही है आ रही है दूसरा ये कि फिर देखेंगे बाद में हमने फील्डिंग में बॉलिंग में कैसे इनको बेव करना है। तो पहले हम बैटिंग करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे इनको 0 विकेट के नुकसान पे स्कोर ज़्यादा करें और जितना ज़्यादा हम मैक्सिमम स्कोर बोर्ड पे लगा सकें। तो बाकी फिर देखा जाएगा। तो हमारे साथ नौशेरवा मौजूद हैं डेलस के। ठीक है, नौशेरवा में बताएंगे आप क्या स्ट्रेटजी होगी? इनिशियली आप बॉल कर रहे हैं तो क्या टारगेट आपने सोचा हुआ है और किस लिहाज से जो है आप कैलिफोर्निया जो हिस्टोरिकली जो है वो इनकी बैटिंग ही करते हैं पहले वो और अच्छा टोटल देते हैं, तो आपके ख्याल में कि क्या वजह हो सकती है कि जो है ना आप मतलब क्या स्ट्रेटजी अगेंस्ट उसकी यूज़ करेंगे? डेफिनेटली आई थिंक उन्होंने पिच के हिसाब से बैटिंग का फ़ैसला किया है। उनके ऑब्वियसली उनके दिमाग में होगा अच्छा टारगेट देने को, लेकिन हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें जितने कम टोटल पे। आई थिंक ज़्यादा 150 से ऊपर विल बी चैलेंजिंग। ठीक है, चलें, गुड, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, गुड लक। हैं जी, अच्छा ये नाज़रीन हम आपको एक ज़रा पिच दिखा दें। ये पिच जो है हम यूज़ कर रहे हैं जो पूरी सुबह यूज़ नहीं हुई और ये नेचुरल टर्फ यूज़ हो रही है और लग ऐसे रहा है कि इट्स के प्ले आउट इवन करेगी। थोड़े से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं पिच के अंदर, तो उससे ज़ाहिर ये होता है कि ये हेल्प करे शायद स्पिनर्स को। तो अब देखते हैं कि किस तरह जो है ये मैच चलता है आगे।
तो इंशाल्लाह फिर मैच के बाद मिलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो कर रहा हूँ आरी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आरी जब
अस्सलाम वालेकुम टेस्टिंग टेस्टिंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन प्राइमवेरा क्रिकेट क्लब अटलांटा यूएसए में नासिर क्रिकेट टूर्नामेंट मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है और उसका फ़ाइनल मैच चीनो क्रिकेट क्लब और टेक्सास टाइगर्स के माबैन शुरू होने वाला है। चीनो क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया है। नाजरीन मैं इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूब पे लाइव थ्रेड जा रहा है और बहुत से दोस्त इसको हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की इजाज़त से इसको लाइव किया गया है और बहुत से दोस्त इसको लाइव देख और सुन रहे हैं, तो इसलिए हम ये नाजरीन और सामीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन और सामीन की इतला के लिए अर्ज़ है कि चीनो क्रिकेट क्लब और टेक्सास टाइगर्स इस फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किए हैं और यहाँ पर ये दोनों टीमें और ख़ुसूसन और सेमीफ़ाइनल में क्वालिफ़ाई करने वाली टीमें और तमाम प्लेयर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इंतज़ामिया और मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए, और ये जो मैच दिखाने के लिए तमाम बंदोबस्त किया गया है समी बसरी का, इस हर चीज़ के लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि किसी भी चीज़ के बगैर ये टूर्नामेंट इतनी कामयाबी और ख़ूबसूरती से आपके सामने पेश नहीं किया जा सकता था। तो इन सब लोगों को, खिलाड़ियों को, इंतज़ामिया को, सब को जिसने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी कोशिश करके हिस्सा डाला है और उन सब अहबाब को अपनी दुआओं में याद रखें। खिलाड़ी भी बहुत दूर से सेक्रीफाइस करके और पैसे खर्च करके टाइम निकाल कर खेलने आते हैं और फिर आकर इस टूर्नामेंट को जो कि मुनक़िद किया जाना होता है इसको सजाते हैं। ये खिलाड़ी हैं जो कि इस स्टेज के सबसे प्यारे एक्ट करने वाले होते हैं, जो कि इस स्टेज की सजावट को भरपूर कर देते हैं और इतने अच्छे गेम्स, इतने अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरे में हमारे प्यारे भाई शकील अहमद साहिब जो कि इस इंतज़ामिया को लीड कर रहे हैं इस कामयाब टूर्नामेंट को, और बहुत अच्छा माहौल है इस क्रिकेट ग्राउंड में। अटलांटा में मौसम बहुत अच्छा है और हवा हल्की हल्की चल रही है जो कि बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं करती खेलने में, लेकिन मदद करती है खिलाड़ियों को। अंपायर्स पहुंच चुके हैं विकेट पर और इंतज़ार कर रहे हैं कि बैट्समैन और खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच जाएं। हम आपको अभी ग्राउंड से ताज़ा बताज़ा इतलाआत और मनाजिर जो हैं वो पेश करते रहेंगे जिस तरह मैच जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। और दुआ की दरख्वास्त है तमाम देखने और सुनने वालों के लिए कि इस टूर्नामेंट की कामयाब इख्तिताम के लिए दुआ करते रहें कि कोई भी रुकावट पेश ना आए, कोई मुश्किल पेश ना आए और ये टूर्नामेंट कामयाबी से अपने इख्तिताम को पहुँचे। और इस टूर्नामेंट की एक और भी अच्छी बात जो आपके साथ मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा, ये टूर्नामेंट पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पर ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है यूएसए में जिसमें मौजूद चंद गेमों के वो भी बारिश की वजह से टर्फ विकेट खेलने के काबिल न थी। तमाम मैचेस टर्फ विकेटों पर हुए हैं और क्रिकेट को उसकी हकीकी रूह के साथ खेला गया है और बहुत ही दिलचस्प जो हैं वो मैचेस देखने को मिले हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल भी उतना ही दिलचस्प और सनसनीखेज होगा इंशाल्लाह। और अभी इस फाइनल मैच के लिए 3 अतराफ में स्टिल कैमरे लगाए गए हैं। एक मूविंग कैमरा है जो कि एक दोस्त उसको हैंडल कर रहे हैं, और एक या दो इसमें जो और एक या दो ड्रोन भी हैं जो कि कवर कर रहे हैं इस मैच को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कवरेज देने की कोशिश की जा रही है समी बसरी की टीम की तरफ से। वो बहुत जानफिशानी से और मेहनत से और तवज्जो से अपना काम कर रहे हैं और इस मैच को बेहतरीन हालत में आपके सामने पेश करना चाहते हैं और आपको बाखबर रखना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये आप देख सकते हैं कि टेक्सास की टीम ग्राउंड में उतर चुकी है और उस वक्त वो फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं थोड़ी ही देर में, और फिर जो है कि चीनो क्रिकेट क्लब के ओपनर्स के आने के बाद मैच शुरू हो जाएगा। और आप टेक्सास टाइगर्स को ग्राउंड में इकट्ठा देख सकते हैं और मशवरा कर रहे हैं और ज़रूर वो दुआ भी करेंगे इस मैच को शुरू करने से पहले कि बजुज़ दुआ के हमारा कोई और हथियार नहीं है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने की यही तालीम है और ये एक वर्जिशी सरगर्मी है जिससे कि हमारे नौजवान गलत और लग़्व कामों से बचते हैं और अच्छी और तामीरी और सेहतमंदाना सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। और मैंने पहले भी सेमीफाइनल में भी इसकी तरफ इशारा इस बात का ज़िक्र किया था कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ताला की जो खेलों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो थी उसके पीछे यही वजह थी कि सेहतमंद कौम ही है जो कि तरक्की करती है और दुनिया में तब्दीलियाँ लाती है और अपने काम को आगे से आगे बढ़ाती चली जाती है। तो जब अहमदियों पर दुनिया को आगे से आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी डाली गई है तो फिर अहमदियों को सेहतमंद भी होना चाहिए। तो ये सेहतमंद सरगर्मियाँ ही हैं जिनमें हमारे नौजवान शामिल होते हैं और तामीरी सरगर्मियों की तरफ उनकी तवज्जो रहती है। अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट हमारे दरमियान भाईचारे में इजाफे का बायस हो, हम एक दूसरे से और करीब हों और ये टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छी यादें छोड़ कर जाए और आने वाले टूर्नामेंट के लिए हम इससे मज़ीद बेहतर तैयार होकर अच्छा मंज़र, अच्छे मुकाबले और अच्छा माहौल अपने नाज़रीन और सामीन के लिए पेश कर सकें इंशाअल्लाह। चीनो क्रिकेट क्लब की तरफ से सआदत अहमद और मोहम्मद तारिक इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मैं अपने नाज़रीन और सामीन को बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट में इब्तदाई तौर पर 10 टीमों ने एनरोल किया था। न्यूयॉर्क की टीम किसी वजह से आखिरी वक्त में अपने आप को क्विट कर गई, वो ना आ सके और फिर बकिया मानदा 9 टीमों के माबैन ये मुकाबले हुए जिसमें कि 2 पूल बनाए गए थे। एक 5 टीम का था, एक 4 का था और दोनों पूलों की दो टॉप टीम्स जो हैं पूल में हर टीम के साथ मैच खेलना था और दोनों पूल ए और पूल बी से जो टॉप टीम्स हैं 2-2 वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। और जो पूल है चीनो क्रिकेट क्लब
न्यू जर्सी, वर्जीनिया वॉरियर्स हेडक्वार्टर और नॉर्थ कैरोलिना बहुत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया था, क्योंकि चीनो क्रिकेट क्लब स्ट्रेट थ्रू तमाम मैचेस जीती थी, लेकिन बाकी टीमों के माबैन मुकाबला सख्त था और नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया वॉरियर्स के माबैन सेमीफाइनल के लिए एवरेज की बुनियाद पर फैसला होना था। हेडक्वार्टर और वर्जीनिया वॉरियर, माजरत खा हूँ, नॉर्थ कैरोलिना नहीं, हेडक्वार्टर और वर्जीनिया वॉरियर में से हेडक्वार्टर ने अच्छी एवरेज की बुनियाद पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसी तरह दूसरे पूल में वर्जीनिया, टेक्सास टाइगर, बाल्टीमोर और अटलांटा की टीमें थीं और उन 4 टीमों में से बाल्टीमोर और उन 4 टीमों में से बाल्टीमोर और टेक्सास टाइगर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और दोनों सेमीफाइनल्स में से एक में चीनो क्रिकेट क्लब ने फ़तह हासिल की, दूसरे में टेक्सास टाइगर्स ने फ़तह हासिल की और अब दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, फ़ाइनल के लिए तैयार। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि सेमीफाइनल्स जो हैं वो मैट के ऊपर हुए थे, टर्फ पर नहीं हुए थे, क्योंकि पिच जो थी वो नमी की वजह से खेलने के काबिल न थी। लेकिन ये जो फाइनल का मैच है ये टर्फ के ऊपर हो रहा है और बहुत ही दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़िया के हाथ में नया बॉल है, तो ज़िया जो हैं वो इनिंग का आगाज़ अपनी बॉलिंग साइड की तरफ से अटैक करके करेंगे और मोहम्मद तारिक और सादत अहमद बैटिंग साइड से इनिंग का आगाज़ करेंगे। ये मोहम्मद तारिक इस वक्त घास उड़ाकर चेक कर रहे हैं हवा किधर से किधर जा रही है, ताकि वो अंदाज़ा करें कि छक्का किधर को लगाना है और रोकना किस तरफ से है। ये भी एक टेक्निक होती है, क्योंकि हवा के मुखालिफ जाकर प्लेयर कोशिश करता है कि वो ऊंचा शॉट ना खेले। तो अब तकरीबन मुकाबला शुरू हुआ चाहता है, चंद लम्हों में फील्ड प्लेसमेंट हो चुकी है और इंशाल्लाह एक अच्छी और सेहतमंद मुसाबकत की दौड़ हमें देखने को मिलेगी, जिसमें दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करेंगी। अंपायर तैयार हैं और सिर्फ इंतज़ार है उनके अंपायर की इजाज़त का और गेम शुरू हो जाएगा। मोहम्मद तारिक इस वक्त गार्ड लेते हुए कि उन्होंने विकेट के ऊपर कहाँ खड़ा होना है। गार्ड लेने के 2 मकासद होते हैं, एक तो बैट्समैन अपना फैसला करता है मैंने कहाँ खड़े होना है, दूसरा वो अंपायर को भी बताता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ताकि लेग बिफोर की अपील में अंपायर को पता हो कि उसको फैसला करने में आसानी हो कि इस फील्ड बैट्समैन ने गार्ड ये वाला लिया है तो क्या सूरत हाल हो सकती है। तारिक अहमद तैयार हो चुके हैं इस वक्त और ज़िया शेख भी तैयार हैं, रन अप के ऊपर स्टार्ट पर खड़े हैं और आगाज़ करना चाहते हैं अटैक का, सिर्फ अंपायर की इजाज़त का इंतज़ार है। और ज़िया शेख बॉल करेंगे, सामना करेंगे तारिक। उन्होंने एक हाई बॉल, ऊंचा बॉल, फुल टॉस बॉल, इसको बीमर कहते हैं, ख़तरनाक बॉल था जो कि उन्होंने तारिक को करवाया। अंपायर का इशारा है कि ये नो बॉल होगी और इसके साथ ही थर्ड मैन की जानिब मोहम्मद तारिक ने खेलते हुए 2 रन हासिल कर लिए हैं चीनो क्रिकेट क्लब के लिए। तो कोई भी बॉल करवाए बगैर इस बॉल के बाद एक भी बॉल नहीं हुआ और 3 रन मिल चुके हैं टेक्सास टाइगर्स को और एक फ्री हिट भी मिली है, जिसमें कि आज़ादी से खेलेंगे बैट्समैन। देखिए मोहम्मद तारिक इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं। ज़िया गेंद करवाने के लिए आए और उन्होंने मोहम्मद तारिक को बीट कर दिया है। ये फ्री हिट उन्होंने उनको नहीं लगाने दी और बहुत अच्छा बॉल करवाया और मोहम्मद तारिक बीट हो गए।
एक बॉल हो चुकी है, 3 स्कोर हैं। ये अगला बॉल करवाया है जिया शेख ने। मोहम्मद तारिक ने इसको मिड ऑन की तरफ खेला, 1 रन के लिए। फील्डर ने बॉल को वापस जिया शेख की तरफ फेंका। इसी असना में बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। और ये जिया शेख ने बहुत अच्छा बॉल किया है, पिछले पैड पर लगा है सादत अहमद के, विकेटों के बीच में था ये बॉल। लेग बिफोर की अपील हुई है और अंपायर ने कोई तरद्दुद नहीं किया। 1 सेकंड के इंतजार के बाद उन्होंने उंगली खड़ी करके सादत अहमद को जाने की इजाजत दे दी है कि आप पवेलियन में तशरीफ ले जाएं। और सादत अहमद अपनी पहली बॉल पर गोल्डन डक का शिकार हो गए हैं। मोहम्मद जिया शेख की बहुत अच्छी बॉल, उन्होंने बहुत अच्छा आगाज फराहम कर दिया है टेक्सास टाइगर को। सादत अहमद अच्छी बुनियाद फराहम करने में माहिर माने जाते हैं, अच्छे ओपनर हैं। ये नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान है चीनो क्रिकेट क्लब के लिए इनिंग के आगाज में ही। अगले आने वाले बैट्समैन जब क्रीज पर आएंगे तो हम आपको आगाह करेंगे कि अगले आने वाले बैट्समैन हैं मोहम्मद गुलफाम। सादत अहमद 1 बॉल का सामना करके कोई भी रन बनाए बगैर जिया शेख का शिकार हुए हैं। विकेट टू विकेट बॉल थी, पिछले पैड पर लगी, कोई इंतजार नहीं हुआ और आउट करार दे दिया गया। 1 विकेट का नुकसान 4 स्कोर पर। नए आने वाले बैट्समैन हैं मोहम्मद गुलफाम। और ये गोल्डन डक का शिकार हुए हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कि सादत अहमद को सुनहरी बतख मिली है फाइनल में। जिया शेख आए, मोहम्मद गुलफाम को गेंद करवाएंगे। अच्छा बॉल था, अच्छा बॉल था, मिड ऑन की जानिब बॉल गया। जिया शेख ने ओ करने में बॉल को छोड़ दिया और 1 रन मिल गया, बजाय इसके कि वो गेंद को पकड़ते जज्बात का शिकार हो गए। और ये सुनहरी बतख जो सादत अहमद को थमाई है वो जिया शेख ने थमाई है पहली बॉल पे आउट करके। सिंगल के साथ तारिक सामना करेंगे जिया शेख का। और ये अच्छा बॉल था, तारिक अहमद को उन्होंने मुहतात कर दिया है सादत अहमद को लेग बिफोर करके। मोहम्मद तारिक इस अब संभाल कर खेल रहे हैं जिया शेख की बॉल को, वो दबाव में ले आए हैं। अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं जिया शेख और अपने कैप्टन के लिए सर्व कर रहे हैं। दोबारा आए रन अप पर, फील्ड को थोड़ा रिप्लेस किया है, सेट किया, एडजस्ट किया। अब भागे हैं तारिक गेंद करवाने के लिए। और जिया शेख ने अगली बॉल की, बहुत एहतियाती के साथ उड़ता हुआ शॉट खेलना चाह रहे थे, बोल्ड कर दिया है जिया शेख ने। ग्राउंड में किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहे, बहुत तेज भागते हुए वो नाजरीन एक्स्ट्रा कवर की जानिब जाकर खड़े हुए हैं कि सारी टीम उन्हें आकर मुबारकबाद दे। वहां पे उन्होंने बिलाशुबा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और उन्होंने विकेटें उड़ा
देख रहा हूं कि आपको अभी भी बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं मोहम्मद गुलफाम और नए आने वाले बैट्समैन हैं अहमद रजी। पहले ओवर के इख्तिताम पर 2 विकेटों का नुकसान चीनो क्रिकेट क्लब को बर्दाश्त करना पड़ा है और स्कोर है 6। नए आने वाले बॉलर जहां तक मुझे लग रहा है कमर हुसैन है। ड्रोन का मंजर भी आपके लिए मुसलसल पेश किया जा रहा है। दूसरे ओवर का आगाज कमर हुसैन है। कमर हुसैन अगली गेंद के लिए कमर हुसैन आए, उन्होंने बॉल की मोहम्मद गुलफाम को और ये डाउन द लेग थी और अंपायर ने इसको वाइड दिया है। नाजरीन, मैं आपको जो लोग इसको लाइव देख नहीं पा रहे सिर्फ सुन रहे हैं उनके लिए मैं फील्ड प्लेसमेंट बताता चलूं कि शॉट थर्ड मैन के ऊपर है, एक प्लेयर है, फिर गली में है और पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ। और कमर हुसैन अगली बॉल करवाने आए हैं और ये गली और पॉइंट के दरमियान से एक तेज शॉट खेला है गुलफाम ने। 4 रन के लिए कमर हुसैन को रास्ता दिखा दिया है बाउंड्री का। और बाकी स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर है और मिड ऑन पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। तो ये फील्ड प्लेसमेंट है कमर हुसैन के लिए। मोहम्मद गुलफाम ने चौके से अपना जो है खाता वो खोला है कमर हुसैन के खिलाफ। गुलफाम को मशवरे दिए जा रहे हैं, आपने एक चौका मार लिया है, अब आराम से। कमर हुसैन अपना अगला गेंद करवाने के लिए तैयार। गुलफाम को आए, गेंद करवाई और गुलफाम ने इसको बहुत एहतियात से खेल दिया है। कमर हुसैन ने डाइव लगाते हुए इस गेंद को खुद ही रोक लिया है और पीछे मिड ऑन के फील्डर तक नहीं जाने दिया। बहुत उम्दा मुजाहरा किया उन्होंने फील्डिंग का। कमर हुसैन अपना अगला बॉल करवाने के लिए रन अप पर तैयार। सामना करेंगे मोहम्मद गुलफाम और ये उन्होंने फिर एक बॉल को कट करने की कोशिश की, पॉइंट की तरफ खेला और नौशेरवा ने उमैर ने इस बॉल को फील्ड करते हुए कीपर की जानिब फेंक दिया। कमर हुसैन तैयार हैं अपना अगला बॉल करवाने के लिए मोहम्मद गुलफाम को। गुलफाम ने इस बॉल को फिर खेला है, ये बॉल पॉइंट की तरफ गई है, नौशेरवा की तरफ, उन्होंने फील्ड किया। दो ओवर के इख्तिताम पर
उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर किया जो मैंने पंजाबी में की थी, उस स्कोर वापस भिजवा दिया है मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे। 11 रन कर दिए हैं चीनो क्रिकेट क्लब ने 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल हो चुका है, 18 ओवरों का खेल बाकी है। ज़िया शेख ने अपना दूसरा ओवर करवाना है पवेलियन एंड से। जरूर। तो अब मेरे साथ एक साथी कमेंटेटर भी तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर हामिद, मेरे फाजिल दोस्त न्यू जर्सी से, बहुत अच्छे सीजन क्रिकेटर हैं। ये भी आपको इंग्लिश में अपना अपना तजज़िया भी पेश करें। जी डॉक्टर साहब। Jazakallah, Nehmat Saab, Assalamu alaikum to everyone. All the viewers, this has been a wonderful environment for the final of Nasir T20 cricket tournament. This has been a really good start by Texas team. ज़िया Sheikh is in his second over. And there is an appeal, and umpire is saying that the ball is missing the leg stump. ज़िया Sheikh is pitching the ball up, giving it all the time to swing. Both the wickets, crucial wickets he took with his in-swinging ball. The first one of batsman who is in form, Saadat Ahmed, and the second one, Tariq Ahmed, who has been playing really good in the whole tournament. Chino Cricket Club needs a partnership here to bring them back. And they have a good player right now batting in the form of Ahmed Razi. If he stays on the wicket for a few overs, he can be a really handy batsman. Gulfam just has to stay there, wait for the ball to lose this swing so he can play his shorts later. ज़िया comes in. The ball is a little outside off. A nicely played shot toward deep point, and looks like that it's been really fielded well by Daniel Ahmed. Good throw towards the keeper. A good start by Texas team. ज़िya Sheikh has been bowling really good. He's using the wind nicely. He's giving the ball enough air. The ball is coming in. Seems like that Chino is in the middle of rebuilding right now. ज़िya comes in, pitches the ball up. Ball moves a little in, and it takes the inner edge of the bat towards mid-wicket, and there's no run. Alhamdulillah, this tournament has been very, very successful so far, except for a few rain-affected games. But overall, it has been a beautiful tournament. Once again, played towards point. Quick single. Umpire says not out. Good throw by Daniel Ahmed, right on the stumps towards Adil Ahmed, the keeper. And this at the end of the over. Still 2 wickets down. And I'm going to switch for this over towards Nehmat Sahib for the Urdu commentary. जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने कमेंट्री पेश की है, बहुत लुत्फ़ आया। 15 स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल हो चुका है। चौथा ओवर कमर हुसैन ही करवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने पिछला ओवर भी अच्छा किया था। तो 15 ओवर हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर चीनो क्रिकेट क्लब एक पार्टनरशिप की तलाश में, और टेक्सास टाइगर्स जो हैं वो 1-2 मज़ीद विकेटों की तलाश में कम से कम हैं 2-3 ओवरों में, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मैच का पांसा पलट देगी। कमर हुसैन तैयार हैं, फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि फील्डिंग प्लेसमेंट हो जाए। दानियाल अहमद फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए
कमर हुसैन एक तब्दीली के साथ आ रहे हैं फील्ड में, और गुलफाम ने अच्छा कनेक्ट किया है बॉल को। इस तरफ गेंद बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। इस वक्त जिस एंड से खेला जा रहा है, इस साइड की कवर साइड बहुत तेज़ है क्योंकि कदरे ढलवान है ग्राउंड। गेंद बहुत तेज़ी के साथ बाउंड्री का रुख करती है। फील्डर ने अच्छा मुजाहरा करते हुए गेंद को रोका, 1 रन लिया इसी असना में बैट्समैन ने। अब कमर हुसैन ने अपना दूसरा बॉल के लिए तैयार हैं। अहमद रज़ी ने गार्ड लिया है, उसको सेट कर रहे हैं बेल्स का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने कहाँ खड़े होना है और अभी वो तैयार हो जाएंगे बॉल का सामना करने के लिए। कमर हुसैन इंतज़ार करते हुए अहमद रज़ी का। अदील जो कीपर हैं, बहुत मजे हुए कीपर हैं, अच्छे कीपर्स में इनका शुमार किया जा सकता है। बिलाशुबा वो विकेट के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं ताकि बैट्समैन को प्रेशराइज़ किया जा सके। हालांकि कमर हुसैन कदरे तेज़ बॉल करते हैं, और ये उन्होंने पहली ही बॉल पैड पर लगा दी है। अहमद रज़ी के पैड पर बॉल लगा लेकिन अपील नहीं हुई। इसका मतलब है कि लेग मिसिंग थी और बॉलर भी इससे इत्तेफाक करते हैं। तो अगला बॉल मोहम्मद रज़ी सामना करेंगे कमर हुसैन का, और ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। अहमद रज़ी ने इसको जाने दिया और कीपर के हाथों में। कमर हुसैन का सामना करेंगे अहमद रज़ी, और ये फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। कदरे पीछे पड़ा था ये बॉल, लेकिन इसकी हाइट कम थी कदरे, और कनेक्ट नहीं कर पाए अहमद रज़ी। कदरे हिद्दत आई है धूप में थोड़ी सी। अगला बॉल रज़ी की जानिब खेला। रज़ी ने इसको पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान प्लेस किया था। फील्डर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फील्ड करते हुए कीपर की जानिब थ्रो किया। कोई रन नहीं आ रहा। मुसलसल प्रेशर बिल्ड करते हुए कमर हुसैन अहमद रज़ी अगली बॉल का सामना करेंगे, और ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मुझे वाइड लग रही है, और अंपायर ने भी इत्फाक किया है, वाइड दे दी है। बहुत ही प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो गया, लेकिन बहरहाल कमर हुसैन हावी नज़र आते हैं मुझे। अच्छा बॉल करवा रहे हैं कंटेन करते हुए। अहमद रज़ी ने इस दफ़ा अच्छा कनेक्ट किया है और बॉल को लॉन्ग ऑफ की, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला है। वहाँ फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड करके रिटर्न किया। 1 रन मुकम्मल किया इतनी देर में बॉलर्स ने, और 18 रन हुए हैं इस वक्त 4 ओवर्स के इख्तिताम पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। कदरे स्लो जा रही, बल्कि काफ़ी स्लो जा रही है चीनो क्रिकेट क्लब, क्योंकि 2 विकेटें गिरी हैं। मैं अब दावत देता हूँ डॉक्टर साहेब को कि वो आपको इंग्लिश में रवां तबसरा और कमेंट्री पेश करें इस फाइनल मैच के लिए। Jazakallah, Nehmat Saab. So far, what Nehmat Saab, what I've been observing from here, and I'm sure the viewers are, that looks like the bounce is a little on the lower side on this wicket, and Adil Saab was standing up to the bowler. So both these factors are playing in the mind of the batsman. It's a good strategy by the Texas team. They are keeping the pressure on, and good fight back by Chino Cricket Club. The fielding has been really sharp. Texas looks like a young, energetic team, and so is Chino Cricket Club. Zia Sheikh comes in, and it's a nicely played drive towards long off boundary. But ball just stopped a few yards before the rope, and Razi takes 3 runs. Ahmad Razi is trying to put pressure back on Texas.
It looks like a low bounce wicket, but so far Texas has been bowling really well. We will know if this partnership grows, then the run rate will increase. Zia comes in. It's a nicely over pitched ball, a little bit in swinger towards long on. Asad Basra throws the ball back towards Zia Sheikh. Texas is looking sharp in the field. Chino is trying to build a partnership after 2 early wickets of their main set batsmen. Saadat Ahmed Sahib and Tariq Sahib were out in the first over of Zia Sheikh. This is Zia's third over. He's bowling well so far. Comes in. Razi Sahib leaves his crease and plays towards long off for a single. Ahmad Razi is trying to put pressure back onto the bowler, which is a good strategy. Even though they have lost 2 wickets, they cannot go in their shells. Gulfam is trying to stay there. Zia comes in. Looks like a full toss ball. We will have to see if the umpire thinks if it's above waist height, which is not. The score so far is 24 for 2. And this is the 5th over, last ball of the 5th over. Zia comes in. A beautiful cover drive by Gulfam. It's in the gap and looks like that it's not going to cross the rope. A good throw towards the keeper. And this is the end of the over. Third by Zia Sheikh. He is in the middle of a good spell. The score is 26 for 2 at the end of 5 overs. A good power play by Texas Cricket Club. And for our Urdu viewers, I am going to hand over the mic to Nemat Sahib again. जी जज़ाकल्लाह हामिद साहब। और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बॉल कदरे लो रह रहा है। हमने जो हफ्ते को जहाँ मैच खेला था उस वक़्त की निस्बत, क्योंकि मैं समझता हूँ विकेट को भी एक गैप की और आराम की ज़रूरत होती है। तो मैच ऊपर तले इस पर हो रहे हैं कुछ, और कुछ बारिश का भी, तो कुछ गेंद लो है और बैट्समैन को कनेक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन यही है खूबसूरती टर्फ क्रिकेट की कि बैट्समैन को महारत दिखानी पड़ती है सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट करने की, और इसी तरह बॉलर को भी। तो मैं ये कहूँगा कि इस मौजूदा विकेट की सूरत हाल को बॉलिंग साइड में से सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िया ने समझा और इस्तेमाल कर लिया है अभी तक तो। लेकिन चीनो जो है, जैसे आपने भी कहा, अपने खौल से बाहर उनको रहना है और अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड किस तरह बॉल करवाते हैं। और मोहम्मद रज़ी उनके ट्रैप में तकरीबन आ गए थे। उन्होंने उनको स्ट्रेच करवा के खिलाया था, बॉडी से दूर खिलाया था, बॉल अपिश हो गई थी। अहमद रज़ी इस वक्त खुशकिस्मत रहे कि फील्डर से दूर थी ये अपिश गेंद। ये है इस बात की निशानी। दानियाल अहमद, मैं जैसे कि बता रहा था, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखने वाले खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के रमूज़ को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्होंने कुछ अहमद रज़ी को स्टाइल को रीड करते हुए फील्ड प्लेसमेंट की थी, उसके मुताबिक बॉल करवाई। अच्छी कोशिश थी और एक रिस्की शॉट अहमद रज़ी को खेलने पर उन्होंने मजबूर किया। बहुत अच्छी बॉल। अगली बॉल करवाएंगे और ये गेंद हवा में है। कमर हुसैन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कैच लिया और अहमद रज़ी उस चीज का शिकार होकर वापस आए हैं। पहली बॉल पर 2 रन हासिल किए।
पहली बॉल पर 2 रन हासिल करने के बाद अगली बॉल पर वो आउट हो गए हैं। अहमद रजी ने 8 रन का इजाफा किया अपनी टीम के लिए 11 बॉलें खेलते हुए। नए आने वाले बैट्समैन हैं शर्जील रऊफ। कमर हुसैन का बहुत ही अच्छा कैच इन द सेफ हैंड्स। उम्दगी के साथ उन्होंने कैच को मुकम्मल किया और अहमद रजी को उन्होंने वापस भेज दिया। और इस विकेट को हासिल करने के साथ ही टेक्सास टाइगर्स ने इस मैच पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली है और चीनो क्रिकेट क्लब को मज़ीद मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। देखते हैं कि चीनो क्रिकेट क्लब इससे कैसे बाहर निकलती है। अगला बॉल करवाया दानियाल ने और ये अच्छी तरीके से बाहर फ्रंट फुट पर आते हुए उन्होंने बहुत एहतियात के साथ खेला है शर्जील रऊफ ने और कोई मौका नहीं था बैट्समैन के लिए भागने का, तो ये डॉट बॉल हो गई। शॉर्ट लेग की तरफ बॉल गया था, फील्डर ने तेज़ी से बॉल को पकड़ते हुए दानियाल अहमद अपना अगला बॉल करवाने के लिए आ रहे हैं और ये बॉल बिल्कुल एज आउटसाइड भारी किनारा बाहर का लेते हुए थर्ड मैन की जानिब आई थी। इसी असना में बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। दानियाल अहमद अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब नजर आते हैं, बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं अपनी फील्ड के मुताबिक, अपनी बॉल को बहुत उम्दा और अंडर प्रेशर रख रहे हैं मुस्तकिल तौर पे। अगला बॉल करवाने के लिए वो तैयार हैं मोहम्मद गुलफाम को। फील्ड को थोड़ा रीएडजस्ट किया है उन्होंने। बॉल करवाई और ये अच्छा कनेक्ट किया है पॉइंट की जानिब, गेंद को छोड़ दिया लेकिन पीछे फील्डर मौजूद था। दानियाल अहमद ने एक स्वीपर भी लिया हुआ था जिसने कि कवर की जानिब मिस फील्ड होने वाली बॉल को फील्ड करके वापस भेज दिया। ये और बल्लेबाजों ने इसी असना में 1 रन मुकम्मल कर लिया। दानियाल अहमद अपना अगला गेंद करवाने के लिए तैयार, फील्ड में कुछ तब्दीली ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा बॉल, इतना अच्छा था कि कीपर भी बीट हो गए हैं और ये 22 का रन मिला है। बल्लेबाजों ने भागकर जल्दी से 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाह रहे थे लेकिन एक बैट्समैन ने फैसला किया कि 1 रन ही काफ़ी है। बहुत अच्छा इख्तिताम किया है दानियाल अहमद ने और मैं डॉक्टर साहब को इससे पहले कि माइक दूं मैं एक सवाल उनके पास छोड़े जाना चाहता हूं कि ये ताज़ा जो तब्दीली पिछले ओवर में अहमद रजी की सूरत में आई है, आप क्या समझते हैं कि क्या काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया है टेक्सास टाइगर गेम पर या आप इसके सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है? जी डॉक्टर साहब। Jazakallah Nehmat Saab. I think the first 3 wickets by Texas has them on the upper hand because in the whole tournament, those 3 batsmen, Tariq Sahib, Saadat Bhai and Ahmad Razi, they have been scoring most of the runs. So to answer your question, yes, I think the intentions were right of Ahmad Razi. He wanted to put pressure back on
the Texas team, but he could not middle the ball, and the ball went straight in the safe hands of Qamar Hussain. Qamar Hussain grabbed a good catch in the last match as well, crucial catch, right on the boundary. He is a very good all-round player. He has opened the bowling. He bats good aggressively, and now with his catching, he's helping his team. Asad Basra is the new bowler. He is an orthodox right arm off break. The batsman plays towards short, long, mid-on area. 1 run. Chino Cricket Club needs a partnership here. They need to take this game deep and try to play 20 overs. A partnership here for next 5-6 overs where they can milk the ball. The bowling has been good so far. Danial Ahmed has just bowled his first over, has taken the crucial wicket of Ahmed Razi. Now Asad Basra has just started his over. The wicket is supposed to turn a little bit. In the last few games we have seen here that the wicket is turning, and he is bowling with the wind, so it's going to be hard to clear the boundary. Nicely played by Gulfam on the back foot. The first one, and they are trying to take the second run, which could be risky. So this decided to just keep it to 1. Asad Basra is a good bowler. He mostly bowls off break with a few shooters in between, so the batsman has to look for those shooters. This was the inside news for the batsman. Comes in and nicely flighted ball, a little over pitched, no run. Nehmat Saab, I'm impressed with the effectiveness of the Texas team's fielders. They look, looks like that they have new young players who are looking really, really sharp in the field. Zia Sheikh has bowled a really good spell, 3 overs so far, taken 2 crucial wickets. I've noticed that he has improved his fitness a lot, mashallah. And with the fitness, his bowling has been improved as well. So a good incentive for everyone who wants to play cricket. Fitness does matter. Asad Basra comes in, over pitched ball, no run. 1 ball is left, sir. Umpire is saying no, this is the over. Although the official scorer are saying that 1 ball has to go, so he has to go with the official scoring. Okay, we are rechecking. At the end of 7 overs, Chino Cricket Club is 33 for 3 with Muhammad Gulfam batting nicely on 14, keeping one end together, and he has recently been joined by Sharjeel Sahib, who is batting on 2. 2 spinners, Danial Ahmed from the far end and Asad Basra from the pavilion end. They have been in the middle of a good spell. Chino Cricket Club needs to build a partnership here and pressure on to stay on top and keep their noses in front in this game. Nehmat Saab, I'm going to hand over the mic to you, and I'm going to throw a question to you as well, like you did to me. What do you think is a good competitive total on this wicket? दानियाल अहमद ने पहला बॉल करवाया है गली की तरफ. संजील अहमद ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है. मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी दानियाल अहमद ने ये कहने के लिए कि वो एग्जैक्टली अपनी फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक गेंद करवा रहे हैं. तो डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ. इस गेंद के बाद असल में दानियाल इतनी तेज़ी से बॉल करवाते हैं कि मुझे 2 चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, उसकी बॉल और आपका सवाल.
और ये बॉल फिर गली में आई है, संजील ने फिर वही रिपीट किया है, गेंद को पकड़ के वापस रिटर्न किया है, माशाल्लाह अच्छी फील्डिंग। जी डॉक्टर साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये विकेट आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है और कुछ ग्रिप भी कर रही है, तो मेरे ख्याल में 120-25 का टोटल एक बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल होगा। लेकिन दूसरा सवाल आपके सवाल से ये निकलता है कि क्या 120-25 हो जाएगा, ये भी एक देखने की बात है कि चीनो इस वक्त उस पोजीशन में मुझे लग नहीं रही। अच्छा खेला है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब स्वीपर मौजूद था, दानियाल अहमद ने बहुत उम्दा फील्ड प्लेसिंग की है, उसके मुताबिक वो गेंद करवा रहे हैं। सिंगल के अलावा वो कोई लग्जरी दे ही नहीं रहे हैं बैट्समैन को, और ये उनको फ्रस्ट्रेट करेगी, उनको वो आउट ऑफ द बॉक्स खींचेंगे, लेकर बाहर आएंगे उनको उनकी कंफर्ट जोन से और मुश्किल पैदा करेंगे और फिर विकेट निकल सकती है। बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं दानियाल अहमद, अपना चौथा बॉल करवाएंगे और ये उन्होंने कनेक्ट किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक तेज शॉट गया है, लेकिन कमर हुसैन वहां मौजूद हैं, उन्होंने बहुत आराम से उस बॉल को फील्ड करके फर्स्ट टाइम थ्रो बैक टू द बॉलर, एक बाउंस के बाद अच्छा थ्रो था कमर हुसैन का। और आप जो डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि बॉल मिडल नहीं हुई अहमद रज़ी की, उसमें एक चीज़ मैं इजाफा करना चाहूँगा कि अहमद रज़ी को लॉन्गर एंड भी उन्होंने चूज़ किया, उस तरफ बाउंड्री कदरे लंबी है और ये हवा के रुख की वजह से वो उनको लेकर गए हैं दानियाल अहमद कि तुम्हें मुझे छक्का मारने के लिए लॉन्गर एंड पर मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा, और वो कामयाब हो गए। ये मुसलसल एक स्कोरर जो हैं एक बॉल पीछे रह रहे हैं या अंपायर एक बॉल आगे जा रहे हैं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। ये कुछ मुसलसल उनके क्लेम आ रहा है कि एक बॉल रहती है लेकिन ओवर दे दिया जाता है। और डॉक्टर साहब मुझे भी इस दफ़ा लगता है कि 5 हुई हैं, क्योंकि मैं हर बॉल को गिनता हूँ साथ, तो मुझे भी लग रहा है कि 5 हुई हैं, लेकिन ऑफिशियल स्कोरर और अंपायर का ये फैसला है, वो क्या फैसला करते हैं। दानियाल अहमद का एक अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ है। और डॉक्टर साहब मैं आपसे ये थॉट में छोड़ रहा हूँ कि आप अब उस सवाल से अगला सवाल है, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं 35 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर जो है इस वक्त चीनो क्रिकेट क्लब का स्कोर कार्ड है, तो क्या वो 125 पर पहुंच जाएंगे? आपकी क्या प्रिडिक्शन है जो क्रिकेट की आपका नॉलेज के मुताबिक? Jazakallah. Daniel comes in, back of the length ball, and no run. Actually, this was the last ball of the previous over, which umpire couldn't count properly. But it was a dot ball, and Daniel has bowled his third over. So far, he's been bowling really, really well. Nice areas, keeping the ball in check. Asad Basra is continuing his off-spin bowling from the pavilion end. This has been a very, very good performance by Texas so far. Chino Cricket Club, after losing 3 wickets, is trying to get back in the game. This partnership needs to grow, slowly growing. A pitched up ball,
slower in pace, tucked away towards fine leg with for a single. Nemat Saab, you asked me the question if they would be able to make it. I think this is the first time in the tournament that the middle order of the Chino Cricket Club has been exposed. So they do not have enough batting practice because most bulk of their runs have been scored by their in-form top order batsmen. But if Gulfam Sahib and his partner Sharjeel Sahib can bring them back, this will be a good comeback by Chino Cricket Club. It's a wide ball towards leg side. Asad tried to bowl a little fast. I'm not sure if it's a good strategy right now, but single for Chino Cricket Club. Nicely bowled ball, an appeal for an LBW, but the umpire, I think, said that it was a little high. Looks like that it was. Driven cover drive has added 2 runs in the total of Chino Cricket Club. Asad comes in, a nicely flighted ball, and there is a gap between the bat and the ball, and I think the ball hit top of off stump. And it's a timely wicket by the Texas Cricket Club. The 4th wicket is down, and this was on the cards, looks like, because the batsman was playing a little tentative. Chino Cricket Club is under pressure right now. They've lost 4 crucial wickets. They need a partnership and try to take this game deeper and play 20 overs. Give themselves a respective total, and with the wind blowing and them having a good bowling lineup, a low bounce wicket, they can try to defend it. Umpire is asking if 1 ball is left, and the answer by the official scorer is yes. The total score so far by Chino Cricket Club is 40 for 4, and we are at the end of the 9th over. Asad Basra is bowling really well. He's using the wicket nicely. The wicket is turning. In the initial overs, we saw that Zia Sheikh swung the ball. So these are not friendly batting conditions. Anything over 120, 130, Nemat Saab, could be a match-winning total. This looks like a wide on the leg side. Texas need to stop these extras. They need to keep the pressure going. On the other hand, Chino Cricket Club needs to build a partnership. A faster one. Loud appeal. Umpire is still thinking. And looks like that there was an inside edge or no. Or maybe, I don't know. Umpire didn't say. So either it was outside off or an inside edge. Asad Basra is still in shock. Noshirwan doesn't know what to say. Adil is telling him, koi gal nahi, keep on going. And this is the end of the over. And I'm going to hand over. The score is 41 for 4 at the end of 9 overs. Nemat Saab, what do you think about this appeal and umpire not giving this out? From here, it looked like that it was outside off or an inside edge. But we are, of course, sitting a little far away. जी डॉक्टर साहब, अंपायर का जो इशारा है वो बता रहा है कि उन्होंने इनसाइड एज की बजाय उन्होंने बताया है कि ये साइड पर था. अदरवाइज़ तमाम कंडीशंस मेट थी. बॉल लो भी रही है, हाइट का भी कोई मसला नहीं और तेज़ी से निप हुई है.
तो मे बी उन्होंने देखा हो कि पिच जो है बाहर हुई हो, ये चांस हो सकता है। इम्पैक्ट अगर फिर भी अंदर हो तो बेनिफिट का डाउट उन्होंने दे दिया है। और अपील बहुत ज़ोरदार थी। तो यहाँ एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ से तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अब एक और फिनोमेना फेस करना है टेक्सास टाइगर को। ये बड़ी वोलाटाइल किस्म की टीम है चीनो क्रिकेट क्लब। अब ये लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन इनको फेस करना पड़ेगा 3-4 पार्टनरशिप के लिए, एंड इट्स रियली रियली कैन बी ईजीली डिस्टर्बिंग इफ़ द बैट्समैन जो हैं जो कि अक्लमंदी से खेलें, तो फिर ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड को हर दफ़ा इधर उधर स्विच करना पड़ता है और ये डिस्टर्ब करती है। लेकिन देखते हैं, दानियाल अहमद बहुत अच्छा गेंद करवा रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली तैयार की हुई है उसके मुताबिक उनको फील्डर सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो गेंद उसके मुताबिक कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं वो सोच रहे। गेंद तेज़ी के साथ बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछे डीप में फील्डर नहीं था, सजील ने उसको अच्छा फॉलो अप किया है और गुड रिटर्न, और पीछे गेंद को फेंका है, तेज़ रिटर्न किया है उन्होंने कीपर की तरफ। 2 रन्स मुकम्मल किए हैं बल्लेबाजों ने इसी असना में। दानियाल अहमद का ओवर जारी है और मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मुझे अब जो चीज़ें नज़र अभी आई हैं 2 ओवर्स में ही मैंने महसूस किया है कि मैं थोड़ा सा टारगेट को नीचे ले आता हूँ। मेरे जहन में एक और चीज़ आई थी जब आप तज्जिया और रनिंग कमेंट्री पेश कर रहे थे कि जो बॉलिंग साइड है चीनो क्रिकेट क्लब की, मैं यहीं तक रखूँगा इसको, क्योंकि हमारी कमेंट्री फील्डर्स भी सुनते हैं। दे हैव लेके आते हैं उसके कंफर्ट जोन से और तजर्बा करने पर और फिर मोजज़े का इंतज़ार करने पर मजबूर करते हैं, जो कि होता नहीं है और वो उनके हक में चला जाता है। बहुत ही अच्छा बॉल करवा रहे हैं, बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है उनकी बॉलिंग देखकर। हालांकि रहम भी आ रहा है चीनों पे, लेकिन बहरहाल मेरे लिए दोनों टीमें बराबर हैं। तो सारी जो क्रेडिट जो सारा है इस लुत्फ का वो दानियाल अहमद के हक में जाता है। बहुत ही अच्छा गेंदकार, और उन्होंने ये बॉल पैड पर दे मारी है और बहुत ही प्लम्प लेग बिफोर उन्होंने अपील करते हुए दानियाल अहमद को पता था कि ये शिकार उनके शिकंजे में आ चुका है, और वही हुआ है नाजरीन। अंपायर ने कोई तरद्दुद नहीं किया उंगली खड़ी करने में और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है उन्होंने कि बैट्समैन को कि आप तशरीफ़ ले जाएं और अता को मौका दें कि वो आकर अगर अपना जादू जगा सकते हैं तो ठीक। अब 2 बैट्समैन जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे चीनों की क्रिकेट क्लब। जा रहे हैं और अपनी विकेट नहीं दे रहे, और मैं इस वक्त जो देख रहा हूं अपने क्रिकेट की जो तजर्बे से कि गुलफाम ही मुझे वो बैट्समैन नज़र आ रहे हैं जो कि कोई मोजज़ा करेंगे या करवा सकते हैं अपने इर्द गिर्द इनिंग को घुमाकर, और बाकी खिलाड़ी जो दूसरे हैं अगर कोई उनके साथ खड़ा हो जाए तो उसके साथ एक रिवॉल्विंग पार्टनरशिप लगाकर, तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तो मज़ीद गिरफ्त मजबूत हो गई है और 125 फिर 110 और अब मैं बमुश्किल 100 पे देख रहा हूँ डॉक्टर साहब। ओवर जो हैं इस वक्त हो चुके हैं 10 और स्कोर है 44 5 विकेटों के नुकसान पर। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू। क्रेडिट जो सारा है इस लुत्फ का वो दानियाल अहमद के हक में जाता है। बहुत ही अच्छा गेंद कर, और उन्होंने ये बॉल Who is in the middle of a very nice inning. He's looking relaxed. I think that's what Chino Cricket Club needs. Last 2 wickets.
were unnecessary wickets. I think somebody needs to stay with Gulfam, who is looking calm, and with keeping the conditions in mind and the way Texas is bowling, his innings could be a crucial innings. Asad comes in, a faster one, which was picked by the hand from Gulfam, played towards mid-on area for a single. Asad Basra has been bowling really well. He is bowling his third over. On the other hand, Gulfam is fighting really well. He is batting on 21 with one boundary. Someone needs to stay with Gulfam to take this innings deep towards the 20th over. Nemat Saab, you mentioned the bowling of Chino Cricket Club. They have good bowlers in the form of Saadat Ahmed, who has been an in-form bowler, has been taking wickets. This was an uppishly played shot, and the fielder dropped the catch. This could be crucial. They have good spinners. Tariq Saab has been in good form. So is Ata, and Rehan Saab has been bowling well. So anything over 120 could be competitive here. Chino has been playing competitive cricket. Texas has been relentless as well. We are. This looks like a low-scoring game, and as you know, the low-scoring games could go either way. Asad comes in, and five. Gulfam is batting really well. I think he should just keep milking the ball like that. It's not going to be easy to hit big boundaries on this ground. A water break is going on. 11 overs are done. Conditions are great. Sun is out with some clouds. Texas in green and California in brown. Sorry, Chino Cricket Club in brown. A left-hand, right-hand combination managed really well by Texas Cricket Club. Sajil is the new batsman who has been bowling really well. Nemat Saab knows him. He's a youngster. I would hand over to him and tell us more about this youngster Sajil. Nemat Saab. जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह 47 स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 12वां ओवर शुरू करने आए हैं सजील अहमद। यंग टैलेंट हैं टेक्सास के, लेग स्पिन करवाते हैं, बहुत अच्छा बॉल। और मैं ये समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये ताबूत में आखिरी कील लग रहा है। ये लड़का बहुत ही अच्छा बॉल करा रहा है, इस कंडीशन में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर चीनो क्रिकेट क्लब ने इसको रिस्पेक्ट दे के एहतियात से ना खेला तो ये बहुत डैमेज कर देगा और मैच शायद वक्त से पहले ख़त्म कर दे। बहुत ही टैलेंटेड लड़का है माशाल्लाह, और बॉल लो भी रह रहा है, ज़ोर वो लगाता नहीं है और इन द लाइन अपनी कैपेसिटी में गेंद कराता है, बाहर नहीं निकलता अपने दायरे से, और ये उसकी काबिलियत है। एक अच्छा उभरता हुआ हमारा खिलाड़ी है टेक्सास गल्फ़ रीजन से माशाल्लाह। और
ये देखें उसका बाल जो है वो कोई अभी सिर्फ रिलीज़ कर रहा है, हवा भी उसको साथ में और एवरीथिंग जो सब चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहा है। बहुत अच्छा बॉलर है माशाल्लाह। अता को मुश्किल में वो डाले हुए है, लेफ़्ट हैंड बैटिंग कर रहे हैं अता। 2 बालें डाट हो चुकी हैं और ये देखें उन्होंने डिप्रेस होकर जो ये एक शॉट उन्होंने खेला है मुझे नज़र नहीं आ रहा, और 2 बालों की डाट इतने कम स्कोर पे दबाव होता है तो मिड विकेट की जानिब बाल गया। इस असना में बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। ये डॉक्टर साहब ये सजील अहमद ने जो है पहले मैच में फ़तह की दिलवाई थी टेक्सास को। बहुत अच्छा टोटल दूसरी टीम कर चुकी थी, 10 ओवरों में तकरीबन 95 के करीब थे। 11वां ओवर इनको दिया गया और उन्होंने 5 विकेट जो हैं वो विकेटें हासिल की और अपना एक कम टोटल के ऊपर कंटेन कर दिया। एक और डार्ट बॉल इसी असना में outside the off stump, tucked away by toward short cover by मोहम्मद गुलफाम। सजील अहमद गुलफाम को गेंद करवाएंगे और ये आउटसाइड से ऑफ स्टंप बाहर था, पीछे पड़ा हुआ गेंद था, थोड़ा सा लूज कर गए जिसका फ़ायदा उठाया मोहम्मद गुलफाम ने और न जाने क्यों दूसरा रन उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इस वक्त क्योंकि कमर हुसैन गिर चुके थे गेंद पकड़ते पकड़ते तो 1 रन जो है वो थ्रो का लिया जा सकता था, लेकिन मोहम्मद गुलफाम ने मुनासिब समझा कि 1 रन पर इक्तफ़ा किया जाए। और अब अता सामना करेंगे सजील अहमद का। दाएं हाथ से बाल करवाते हैं, बहुत अच्छा बाल करवा रहे हैं नपातुल्ला, और ये फील्डर की तरफ गया है या नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, और फील्डर वहाँ पर मौजूद था, काउ कार्नर की तरफ खेला था और अच्छा फील्ड किया है। मेरा ख्याल है उमैर अहमद थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फील्ड किया। 50 रन मुकम्मल हुए हैं इस फील्डर ने बहुत फुर्ती के साथ गेंद रिटर्न करने किया, उसके बावजूद 2 रन मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ 12वें ओवर के अख्ताम पर 51 रन कर चुकी है चीनो क्रिकेट क्लब। और डॉक्टर साहब मैंने एक और चीज़ देखी है, अभी अगर आप इसके ऊपर दें राय, दोनों एंड्स मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं, आपकी राय? Ji, Jazakallah. Before I answer your question, one thing I would definitely want to mention that the conditions have been read nicely by Texas captain. Noshirwan has read the conditions well. Initially, the fast bowlers weren't trying to bowl too fast. They were just hitting the right areas, swinging the ball, giving the ball enough air, giving it chance to swing. Zia Sheikh took 2 early wickets, and then when the spinners came on, they bowled the right areas. So they didn't change the spinners. They brought another spinner. So this has been a good strategy by Texas captain, reading the conditions and the wicket well, and so far it's going in their favor. And this, I'm sure, this data is being registered with Chino Cricket Club. Spinners are not easy to get away. Fast bowlers could be expensive here. Asad is trying to finish his spell on a high. Comes in, and Gulfam has been going and on the front foot and back foot nicely. He's reading the line and length very, very nicely. He's playing within himself, taking the odd singles, taking the doubles. The running between the wicket could improve. They need to convert these singles into doubles, because those singles, those doubles can make a big difference at the end. Ata is going to face Asad, who decides to bowl round the wicket. Ata looks like in an aggressive mode. He's trying to take the charge to Asad. Couldn't time the ball towards long on cow corner area. Only a single. I think it's not easy to clear the boundary here. It's a big boundary. The wind is a factor. The batsmen, Chino Cricket Club's batsmen, haven't had enough batting practice except for their main
two or three top batsmen. Nicely tucked towards deep fine leg area by Gulfam. I must say that Gulfam is playing really well. He needs to bat 20 overs, otherwise there is a risk that Chino may get all out before within 20 overs. Texas team has been looking sharp in the field. Chino is trying to fight back in this, but I would say Nematsov that Texas still has their noses a little ahead. Pitched up ball, nicely played towards long on area. Danial Ahmed is a good fielder with a fast arm. Throw towards the bowler. Asad has been smart in his bowling, hitting the right areas, not giving pace to the batsman. Comes in. He heard me and pushed this ball a little faster one, which was tucked, which was stopped nicely by batsman Gulfam. I think this is 13th over running, Nematsab, and a nicely flighted ball for no run. And at the end of 13 overs, 55 for 5, Asad has finished his over for 15 for 1. Good spell by Asad. And a smart move by their captain Noshirwan, having him finish his spell. I think Danial has 1 over left. 55 for 5, 13 overs. Looks like Sajil is going to continue because he has bowled good first over. And with the left-hander Nematsab facing an off-spinner, a smart move by the Texas captain, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और वो उनको मुश्किल में डाल रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके आने से पहले मैं 2 लफ्ज़ इंग्लिश में जाते हैं रनअप में, फिर मैं चेंज करता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ तमाम देखने वालों के लिए और खेलने वालों के लिए, क्योंकि हम यहाँ सब सीखने आए हैं। दानियाल जो हैं, सजील आए, उन्होंने बाल किया है, बाल को जाने दिया कीपर के हाथ में, क्योंकि वो वाइड का तवक्को कर रहे थे और अंपायर ने दिया। तो डॉक्टर साहब दानियाल जो हैं वो इस हवा के बीच में अगेंस्ट द विंड आप देखें, वो 2-3 बाउंस वाला थ्रो कर रहे हैं। वो हवा का एरी थ्रो नहीं करते कि गेंद जल्दी पहुंचे, और वो बैट्समैन को कंटेन करते हैं कि वो दूसरा रन ना लें। और वो तेज़ आर्म तो उनके हैं जो कि आपने मेंशन किया, वो उसके साथ वाइजली बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। और सजील अपना अगला गेंद करवाने आए हैं। पहला बॉल वाइड हुआ था और अता ने ये अच्छा कनेक्ट किया है, गेंद गोली की तरह गई है 4 रन के लिए। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, जिंदगी फूंक दी है उन्होंने चीनो के पवेलियन में इस 4 रन के साथ। इस 4 रन की बहुत प्यास थी जो कि बड़ी देर के बाद मिला है, और ये बूस्ट करेगा इस वक्त और हौसला अफजाई करेगा चीनो क्रिकेट क्लब की ग्राउंड में भी और पवेलियन में भी। सजील अहमद के ऊपर थोड़ा सा हावी हो गए हैं अता इस शॉट के साथ, क्योंकि पहली गेंद पर जब 4 रन लग जाते हैं ख़ासतौर पे T20 में, तो बैट्समैन के पास लीड लेने का चांस होता है, जबकि स्पेशली एक वाइड भी मिला हो। 5 रन मिल चुके हैं, एक बॉल होगी है अभी, और उन्होंने इस बॉल को लॉन्ग ऑन की जानिब खेल के सिंगल लेना चाहिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। गुलफाम ने कहा कि ये सिंगल मुमकिन नहीं है, और वो ये डॉट बॉल हो गया है। 2 बॉल हो चुके हैं सजील अहमद के, तीसरा बॉल करवाएंगे अता को। आए आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, और ये बहुत उम्दा कनेक्ट किया है, बहुत ही उम्दा कनेक्ट किया है। इतनी लंबी बाउंड्री के ऊपर उससे भी लंबा छक्का उन्होंने मारा है। और नाजरीन आप यहां देख सकते हैं कि ग्राउंड में जश्न का समा है। चीनो क्रिकेट क्लब खुश हो गई है इस छक्के और चौके के साथ, बहुत हौसला अफजाई हुई है उनकी, और दोनों बैट्समैन भी इस वक्त अच्छे मोड में आ गए होंगे और कदरे रिलैक्स फील कर रहे होंगे। उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा था, पहली बॉल पर चौका मार के वो हावी हुए हैं सजील पर। अब वो इस ग्रिप को छोड़ना नहीं चाहते और वो कोशिश कर रहे
इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सजील आए हैं, अता को गेंद करवाएंगे और ये अता ने उसको संभाल कर खेलते हुए शॉर्ट कवर की जानिब एक सिंगल ले ली है और ये ओवरथ्रो हो गया है। चौका होने की उम्मीद है और नाजरीन ये 4 रन हो गए हैं। जिया अपनी मुकम्मल फिटनेस के बावजूद ये ओवरथ्रो नहीं रोक सके। थ्रो बहुत तेज था क्योंकि अता ने गुस्से में ले आए हैं फील्डर को, उन्होंने ये थ्रो में गुस्सा निकाला जिसकी वजह से ये मजीद नुकसान हो गया है। इसको 4 रन ये बहुत याद आ सकते हैं टेक्सास टाइगर को बाद में, ये हमने क्यों दिए थे। बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है ये ओवर टेक्सास टाइगर के लिए। अता ने इस वक्त लीड ली हुई है और दबाव में रखे हुए हैं सजील को। यहां पर सजील जो है वो कम उम्री की वजह से ये लेग अंपायर और अता के दरमियान कोई गुफ्तगू जारी है। अता न जाने क्यों मुतमईन नहीं है इन स्कोरों के बावजूद, शायद वो कुछ और मजीद चाहते हैं और कुछ गुफ्तो शनीद जारी है, कुछ वो कह रहे हैं लेग अंपायर से और एक दूसरे को समझा रहे हैं। देखिए कौन समझता है। वो मेरा ख्याल तकाजा कर रहे हैं कि ओवरथ्रो चूंकि पहला रन लेते हुए हुआ और दूसरा वो ले रहे थे तो उतनी देर में बाउंड्री बॉल क्रॉस कर गई, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 6 रन चाहिए। मैं दूसरे रन की ट्रांजैक्शन में था जबकि चौका हो रहा था और अंपायर ने 5 दिए हैं। तो ये गुफ्तो शनीर जारी है अंपायर्स और बैट्समैन के दरमियान। तो 4 रन 5 मिलेंगे या 6, इसका फैसला हो जाता है अभी। मेरा ख्याल है उन्होंने 5 रन ही दिए हैं, तो 5 रन मिले हैं इस ओवरथ्रो के साथ। 1 छक्का, 1 चौका, 1 वाइड, 10 और 11 और 5, 16 रन अभी तक हो चुके हैं। गुलफाम ने इसको शॉर्ट लेग की जानिब खेला, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब, फील्डर ने उसको फील्ड किया। जी मुझे डॉक्टर साहब ने करेक्ट किया है। बैट से 1 छक्का, 2 चौके आए हैं, 5 रन ओवरथ्रो के 1 रन के साथ मिले हैं। काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें सजील की बजाय, सजील ने बहुत अच्छे बॉल करवाए हैं, लेकिन अता जो हैं वो अपने तजर्बे और अपने कद का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इसको भरपूर रिस्क लेते हुए खेले हैं। आसान शॉट्स नहीं थे, लंबी तरीन बाउंड्री पे उन्होंने ये शॉट्स खेले हैं और तमाम क्रेडिट इसमें अता को जाता है। सजील ने ये प्रेशर अच्छा बर्दाश्त किया है, मैं कहूँगा उसने कोई एक्स्ट्रा बॉलें नहीं करवाई। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब कि सजील इस इक्वेशन में कैसा कर रहा था? मैं इससे पहले कि आपको दूँ, मैं आपको स्कोर बताता चलूँ नाजरीन। 14 ओवर के अख्ताम पर 71 स्कोर हो चुका है। 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर ख़त्म हो चुके हैं और डॉक्टर साहब सजील के अलावा दूसरी राय कदरे बेहतर पोजीशन में आ गई है चीनो। जी जज़ाकल्लाह. I would say this is a good counter attack by Ata. I think these couple of shots have brought them right back in the game. I would say a little inexperienced by Sajil with the lefty facing. He was trying to throw the ball rather than giving it revs to take the ball away from the lefty, which was taken full advantage by Ata, who already went in a positive intent. And the overthrow boundary didn't help Texas. So this was overall a good over by
Chino Cricket Club. Good intent shown by Atta. I think this is a smart move. Positive intent shown by Atta. New bowler is Noshirwan, who I think is a fast bowler, but he's trying to bowl spin here, Nemasav, which can go either way. But I think it could go towards Chino Cricket Club. If he is a fast bowler, he should back his skills and bowl fast bowling. But I think he's trying to keep the wicket in mind and slow the pace, which is a smart move as well. Comes in for his second ball, and good ball, good area. Straight towards Asad Basra with a slight misfield. Gulfam is keeping this innings together. Chino slowly but surely coming back in the game. Last over, good over for Chino Cricket Club. Texas body language is changing a little bit. Chino, Atta, towards point. Deep point, single. Nemat Sahab, I was happy with those boundaries that injected some energy in your commentary as well. And you got the crowd going. I must say here that this tournament hosted by Khuddam al-Ahmadiyya in Atlanta, and I would like to take this opportunity to thank the whole Atlanta Jamaat for hosting such a beautiful tournament, wonderful tournament. Sadr Saab is sitting here. I would like to thank him, Qaid Saab Khuddam al-Ahmadiyya, who has been serving us from day one with his friendly team. Jazakallah Sadr Saab Khuddam al-Ahmadiyya, Jazakallah Sadr Sahib, and Jazakallah Qaid Saab as well. Noshirwan comes in, slow ball, outside off, beaten by the batsman. Nemat Sahab, slower you bowl in this on this wicket, difficult it is. And Noshirwan is trying to explore those conditions and keeping the slow bowlers on, keeping himself on with his slow outside off bowling. A good comeback by Texas. Captain leading from the front. 15 overs are completed. Chino Cricket Club 74. I think a little miscalculation by Gulfam here, because he should have given the strike to Atta, because he saw how nicely he was hitting the ball. And I think Atta is getting approval from his captain. Should I go? Should I throw my bat? Or should I just keep playing the way it is? Adil Saab is bothering the commentary box by asking score too many times. Adil Saab, you should focus on keeping more than the scoring, but the score is 74 for 5. Momentum was shifting a little bit towards Chino Cricket Club, but a good comeback by Noshirwan. A good over. These last overs, Nemat Sahab could decide the game. If Texas bowls well here and keep the squeeze on, Chino cannot take this game away. But if the onslaught by Atta and sensible batting by Gulfam continues till the 20th over, this game may well shift towards Chino Cricket Club. So far, I would say it's a good competition. Bowling team trying to keep the pressure on, and batting team trying to get back after those early blows they got. Nemat Sahab? जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने तबसरा पेश किया. और कमर हुसैन आए हैं. कमर हुसैन आए हैं इस वक्त अपना ओवर करवाने. उन्होंने अता को बॉल करवाया, लॉन्ग ऑन की जानिब वो खेले. वाइडिश लॉन्ग ऑन पे बॉल गई थी. 1 रन मुकम्मल किया इसी असना में. और डॉक्टर साहब, मैं वाकई आपकी बात से इत्तफाक करूंगा कि
इस बॉल के बाद उन्होंने बोल्ड कर दिया है गुलफाम को। मोहम्मद कमर हुसैन ने एक दफ़ा फिर स्ट्राइक किया है सेमीफाइनल की तरह, जिस तरह के उन्होंने सेमीफाइनल में मोहम्मद महमूद को लेग बिफोर किया था। एक दफ़ा फिर उन्होंने स्ट्राइक किया है। बहुत ही आजमूदा प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो कमर हुसैन अपनी टीम के लिए, और उन्होंने सेट बैट्समैन जो मोहम्मद गुलफाम हैं, जिनसे तवक्को कर रहे थे कुछ अच्छे स्कोर वो अब करेंगे, उस वक्त पे उन्होंने उनको आउट कर दिया है। और यहाँ पर नाजरीन मैं आपको आपकी खिदमत में ये पेश करता चलूँ कि ये अटलांटा की जो लोकल थी, उसके बावजूद गर्म खाना उन्होंने ग्राउंड में मुहैया किया है। और वो इस पे दाद के और तारीफ़ के और जज़ाकमुल्लाह के और दुआओं के मुस्तहिक हैं। ये है नासिर क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेरी क्रिकेट क्लब अटलांटा यूएसए में जारी है, जिसका फाइनल टेक्सास टाइगर और चीनो क्रिकेट क्लब के दरमियान है। इसमें एक तब्दीली आई है, छठी विकेट गिर गई है 75 के स्कोर पर। कमर हुसैन ने ये ब्लो आउट कर दी है विकेट गुलफाम की, और अगला बॉल भी उन्होंने बीट किया है वहीं पर। ये गेंद है या जादू है समझ नहीं आ रहा, ये तो गोंदल साहब ही बताएंगे। उनको कोई पता नहीं लगा कहाँ आई थी, कहाँ टिप हुई और कहाँ चली गई। बहुत ही अच्छा बॉल करवा रहे हैं कमर हुसैन, जारी रखे हुए अपना ओवर कमर हुसैन। और उन्होंने अगला बॉल फिर उन्होंने बोल्ड कर दिया है और उन्होंने मैच को मजीद अपने ग्रिप में ले लिया है। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि चीनो क्रिकेट क्लब सिर्फ मचल सकती है, बकिया 5 ओवरों में निकल नहीं सकती उनकी गिरफ्त से। उन्होंने तकरीबन इस मैच को अपने काबू में कर लिया है, मां सिवाय इसके कि चीनो क्रिकेट क्लब कोई जादू कर जाए, कोई अच्छे परफॉर्मेंस बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो। अभी तक कमर हुसैन ने इस ओवर में फैसला कुन किरदार अदा किया है, 2 विकेटें। और उन्होंने याद रहे नाजरीन आपको अहमद रदी का लॉन्ग ऑफ पे डीप पे ये नीली शर्ट वाले भाई अगर सामने से थोड़ा सा गैप दे दें बस, जज़ाकल्लाह जी। तो और ये तैयार हैं, मोहम्मद रिहान खान आए हैं और ये अच्छा गेंद था, पैड पर लगा है, अपील कर रहे हैं लेकिन आउट नहीं दिया। और इसी असना में एक स्कोर बना लिया है बैट्समैन ने। तो दोनों लेफ्ट साइड बैट्समैन इस वक्त तैयार हैं विकेट के ऊपर। और एक बॉल और का आवाज़ आई है ऑफिशियल स्कोरर की तरफ से। अंपायर्स कुछ जल्दी में लग रहे हैं मुझे डॉक्टर साहब, 3-4 आवाज़ें गई हैं वन मोर की। आप क्या ख्याल है आपका? अंपायर्स लगता है कुछ जल्दी में, शाम को डिनर पे शायद इनवाइटेड हैं। लेकिन बहरहाल गुड स्कोरिंग, ऑफिशियल स्कोरर ऑन द टॉप हैं जी, जज़ाकल्लाह। और लेकिन ये तो एक अज़राह तफन्नन बात कर दी थी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अंपायरिंग की खिदमात जिन्होंने पेश की हैं इस टूर्नामेंट में उनका बहुत अच्छा हिस्सा है। उन्होंने हमें एक सेहतमंद माहौल जो है वो मुहैया किया है। और ये तीसरी विकेट भी उन्होंने ले ली है इस वक्त, अता को काटन बोल्ड कर दिया है कमर हुसैन ने ओवर का इख्तिताम। ये ओवर तो ताबूत में आखिरी कील ही साबित हो गया है, अब मुश्किल हो गए हैं हालात।
डॉक्टर साहब हमारे तमाम तजरिए मुझे लगता है धरे के धरे रह गए हैं। कमर हुसैन ने कमेंट्री को भी ख़त्म कर दिया है तकरीबन। मैं आपको ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। Jazakallah, Nemat Sahib. Kamar Hussain is a very utility player, as I was mentioning earlier. He bowls, he bats, he fields, he takes catches. What doesn't he not do, Nemat Sahib? What doesn't Nemat Sahib, Kamar Sahib not do? He, in the last Majlis Asir tournament, he was the sole warrior from North Carolina and took his team to the final and they couldn't win the championship. He is a very, very utility player, an aggressive batsman by nature. He, as you saw in the last over, he noticed that he pitched the ball up to the new batters and dragged the length back towards Atta, who was a little aggressive, who played a little earlier and took a nice juicy catch. Nosherwan comes in. Rehan Saab goes back on the back foot for a single. Nemat Saab, I think those early three crucial wickets, Chino, this has been a beautiful shot over extra cover, but looks like that Zia has taken the catch, or has he stepped out of the rope? Zia, he's claiming the catch, and batsman is walking outside, or is he questioning the catch? Something is happening, I don't understand, but the new batter has walked in. So looks like that Zia Sheikh has taken the catch. Nemat Sahib, I noticed that Zia has been working really, really hard on his fitness and bowling. Looks like he is working hard on his fielding as well, which is a very good thing. Texas has been playing the conditions really, really well. Rehan is questioning the rope or the the fielder, or he's just saying that he couldn't middle the ball. But it's over for him. And looks like it's last 2 or 3 batters left for Chino Cricket Club. I think they need to... 9 wickets down. I was just told for 76 runs. As we were mentioning earlier, the wickets which Chino Cricket Club kept on losing on regular occasions, they could never come back from that early blows, Nemat Sahib. And although it looks like a short game, but there, as they say, there is a match within the match. There is a test match within a T20 match. Sometimes you have to stay on the wicket. Sometimes you have to stay positive. But looks like that Chino may get bowled out within 20 overs here, which can go against them. 79 runs on the board. Last pair trying to add a few more runs. A single towards square leg area. Nosherwan has been very smart so far. He has not given any pace to the batters. Very smart and sensible cricket here. They're not giving anything away. This is the 4th spinner introduced. Nosherwan has modified his bowling a little bit from medium pace to spin. Danial Ahmed, Asad Basra have bowled their spell. Sajil has bowled 1 over. Zia Sheikh bowled really well in his early 3 overs. A little short. Asif tucked it away towards square leg boundary for a single. A throw on the bounce taken by Adil. Nemat Sahib, the weather has turned out really well. We had a rainful day yesterday, although we were able to complete most of the games. But you could not ask for a better weather than today.
Noshirwan comes in. Good length ball. No run. Asad runs fast and fields the ball. The total score is 79 for 9. Nehmat Saab, we were thinking 120 would be enough here, but I don't see these two batsmen can, if they even cross the score over 100, Chino would be happier. Very well fielding by Asad Basra. No run, and Noshirwan finishes is over. And I think 3 overs left after this. 17 overs have been bowled. 79 for 9. Nehmat Saab, do you see this a one-sided affair, or do you think Chino will give a fight? डॉक्टर साहब ऑन आखिरी जो रास्ता है अब चीनों के पास ही, अगर कोई वो 2 ओवर 3 ओवर निकालें ऐसे जिसमें एक दो विकेटें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बाकी अब मैं ये कहूँगा कि जिस तहम्मुल और एहतियात के साथ ये आखिरी कपल खेल रहा है, इससे आधा तहम्मुल भी जो है उन्होंने शो किया होता। असल में वो कपलिंग ही कर रहे हैं, पार्टनरशिप तो कर नहीं रहे। सो दैट्स व्हाई आई सेड आई मीन इट पर्पसली। तो जितनी तहम्मुल और एहतियात का मुजाहरा ये कर रहे हैं, इससे आधी का भी पहले बैट्समैनों ने किया होता तो मैं समझता हूं कि सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हो सकती थी। देखिए वो लंबे छक्कों के लिए गए हैं, उनको किसी ने नहीं बताया ये लो बाउंसिंग पिच है, लंबी बाउंड्री है, तो वो और कैच पर ज़्यादा आउट हुए हैं। हालांकि उनके आजमूदा कार तरीन बल्लेबाज जो अहमद रज़ी हैं वो भी इसी का शिकार हो गए। दानियाल ने उनको ट्रैप किया बड़े अच्छे तरीके के साथ। और अब कमर हुसैन वापस आए हैं अपना ओवर जारी रखे हुए, और ये पैड पर गेंद लगी है, उन्होंने आउट करार दे दिया है। कमर हुसैन इस वक्त हीरो उभर कर सामने आए हैं टेक्सास टाइगर्स के लिए। उन्होंने इनिंग का खात्मा कर दिया है चीनो क्रिकेट क्लब की। इस वक्त चीनो क्रिकेट क्लब 79 रन के ऊपर ऑल आउट हो चुकी है। सिर्फ 80 रन का टारगेट है उन्होंने टेक्सास टाइगर को दिया है। और इस मैच में हम ये देख सकते हैं कि टेक्सास टाइगर की गिरफ्त मुकम्मल तौर पर बहुत मजबूती से उन्होंने कायम कर ली है, और कोई मौजज़ा ही चीनो क्रिकेट क्लब को बचा सकता है। और ये 80 स्कोर के चेज़ के लिए थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि टेक्सास टाइगर के ओपनर्स जो हैं वो विकेट पर होंगे। तो नाज़रीन हम आपको वो मंज़र भी जो है और दिखाएंगे और उसकी कमेंट्री सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप अगर कहीं जा रहे हैं, मेरा एक सवाल था आपके लिए, तो आपका इसमें क्या ख्याल है कि अगर मैं तो बतौर क्रिकेटर एक बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर एक टीम ऐसा कर सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। और मेरी ख्वाहिश यही है एज अ कमेंटेटर कि मैं अपने तमाशाइयों के लिए इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प रखूं। जीत हार के लिए दोनों टीमें मेरे लिए बराबर हैं। तो ओवर टू यू कि एक कर सकती है तो दूसरे के क्या चांस है। Name what's up, Jazakallah. It's a good question, but I think as we were talking earlier, they are, I would say, 40-50 runs short. Though the conditions are tough for batting, but they are not as tough as the Chino Cricket Club made for themselves. And मेरा ख्याल है कि जो प्रेशर की कमी है ये उनकी फेवर में जाएगी शायद टेक्सास टाइगर। I think Texas is gonna chase this really hard. I think Kamar and Noshirwan are aggressive batsmen. They're not gonna go in their shells. They're gonna take their chances, and a couple of good overs, and the pressure is back on Chino. But on the other hand, as I said, Chino has a good bowling lineup. They are sharp fielding lineup. If they can take 2 or 3 early wickets, they can put pressure back on Texas. This we will have to see when the second innings start. But overall, good performance by Chino Cricket Club. Started well by Zia Sheikh and finished nicely by Kamar Hussain. And I'm really impressed by Kamar Hussain, the way he bowled and the way he fielded. Vice captain of the team. He's walking out now. I don't know why he's behind. He should be leading. He's the vice captain.
but he has shown his team how the bowling is done and how the fielding is done. So, but overall, a very good performance by the Texas team. या तेरी मैं इन्नियां तारीफां कीतियां ने उड़ा आ छेती आ माइक ऑन है जाए चले गए अस्सलाम वालेकुम कमर थोड़े से शर्मा रहे हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब शर्माए नहीं अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ कमर हुसैन साहब हैं माशाल्लाह कमर साहब आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की माशाल्लाह 4 विकेट लिए आपने और ज़िया शेख साहब ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया क्या कहेंगे आप कंडीशंस और विकेट के बारे में सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विकेट माशाल्लाह बहुत सीधा है अगर आप लाइन टू लाइन बॉल करें विकेट टू विकेट तो यू कैन डिफेंड आल्सो दिस टारगेट द मेन थिंग इज़ कि आप जस्ट लाइन पे बॉल करें ये है मेन तो बाकी अभी कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह तो आपने भी जो ये कहा है लाइन टू लाइन तो अगर यही काम अगर चीनो लाइन टू लाइन करती है तो आप क्या समझते हैं आप अपनी टीम को कहाँ रेट करते हैं कि इस टारगेट के लिए आप क्या तवक्को कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी टीम फाइनल खेल रही है तो वो एबिलिटी रखती है इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए लेकिन हमारी टीम जो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा चेस कर रही है तो इसलिए आई थिंक सो 80% टेक्सास विल विन Jazakallah Kamar Saab, good luck for the batting. I know आप aggressive batsman है, and we would like to play some, like to see some shots. So I know you have to pad. So thank you very much. We have Zia Sheikh Zia. Mashallah, you look fit. I've noticed that you have come a long way. Mashallah, working on your fitness, working on your bowling, and I think the wind was helping you. You were bringing the ball in. I had a chat with Tariq Saadat Saab. He said the ball was swinging really, really in. So you read the conditions well. Yeah, I think the wind did help, but also there is something for the bowlers for sure. If you pitch it on the right length, then you will get something from the pitch. But again, you have to bowl in the line. If you over pitch it, then yes, it can go for boundaries. But there is definitely something for the pitch. That's what we're trying to do because we read the pitch before the game. ज़िया साहब आपकी भी बहुत अच्छी कारकर्दगी है मैं बहुत मुतासिर हूँ और आपकी फ़िटनेस पे भी मैं चाहूँगा कि आप एक दो जुमले जो हैं इसके ऊपर रखें कि हमारे जो हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमुल्लाह थे वो गेमों के वर्जिशी मुकाबला जात पे बहुत ज़ोर देते थे तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो मजलिस सेहत और खुदामुल अहमदिया के मुनक़्क़द करदा टूर्नामेंट हैं मसरूर क्रिकेट क्या इन्होंने आपको कन्विंस किया कि आप अपनी फ़िटनेस पे काम करें और माशाल्लाह इतनी अच्छी आप की फ़िटनेस यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ जुमले कहें कि आपको क्या मिला किस तरह कन्विंस हुए आप कि आप इस पे काम करें माशाल्लाह जी जी आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्स मैन के लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है जब हम लोग यूके खेलने जाते हैं वहाँ पे कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स होते हैं और हुजूर अनवर देखने आते हैं और ज़ाहिर बात है फ़िटनेस उन्होंने भी यही कहा है हुजूर ने कि अगर आपकी फ़िटनेस ठीक होगी तो आपका माइंड भी काम करेगा
सो आई वर्क हार्ड क्योंकि मेरा गोल है कि यूएस टीम के साथ जाया जाए इंग्लैंड में एंड टू परफॉर्म गुड क्रिकेट, टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, फिटनेस प्लेज रोल्स क्योंकि एक दिन में दो दो गेम्स खेलने होते हैं एंड इट्स नॉट ईजी। तो इफ़ यू डोंट हैव फिटनेस देन देयर इज़ नथिंग। सो फिटनेस डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल इन एवरी स्पोर्ट। डॉक्टर साहब कुछ सवाल है आपका? Jazakallah, good bowling and good to see you working hard on your fitness and bowling. Good luck for the good luck for the जज़ाकल्लाह। Jazakallah. We also have Gulfam Sahib from Chino Cricket Club. Gulfam Sahib, you played really good innings within yourself, and you read the conditions well. What would you say how the batting conditions were? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. So, I would like to say that the ball was not bouncing much, which was making it very difficult to play on. And the first two bowlers from their side, they bowled really well. One was swinging away, one was swinging in. And that was very difficult to play. And I think that was probably the reason that we lost few wickets early. Once we lost few wickets early, the plan was to go deeper, build the partnership, and take it deep as possible. So we just wanted to play as many overs as possible, and the plan was to get some good score, a competitive score, and we believe that 80, the target of 80, is a pretty good score, and we have the ability to defend this score, and hopefully we're going to try our best, and inshallah everything will work out well. Alhamdulillah. तो मेरा ये आपसे, आपने भी कुछ इस पे जिक्र भी कर दिया है कि आप अच्छी उम्मीद रखते हैं और कोशिश भी करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हिकमत अमली आप अपनाएंगे उसमें अपनी बॉलिंग और फील्डिंग में कि आपको मदद मिले? ये जो आपने भी कहा है कि होपफुली आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, और आप पॉजिटिव हैं और मैं तारीफ़ करता हूँ आपके जज्बे की। माशाल्लाह आपकी टीम खेल कर फाइनल तक आई है और आप पहले ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मेरी तमाम ख्वाहिशात आपके साथ भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा आप करेंगे कि 80 स्कोर के छोटे टारगेट पर भी आप टेक्सास टाइगर को परेशान कर दें? It's a very good question. So first of all, I think we are starting every game, actually every inning, with the prayer and the Durud Sharif, and Alhamdulillah, we have been believing in Allah Ta'ala and praying for the games, and everything is working out very well. Secondly, we have very good bowling. We have good seamers as well as good spinners, and it's a tough pitch, and it's going to be very difficult to play on. And even if it doesn't give you much pace, if the ball doesn't skid, which is not necessarily the case, but if it doesn't skid, we have the capabilities to swing it both ways. So we're going to use those capabilities. And secondly, and more importantly, I think taking catches is going to play a crucial role. And even for that, I think we have the abilities to take catches and do well, perform well in the fielding department as well. Hopefully, I think it's going to be an all-round performance, and inshallah we'll do better and everything will work out, inshallah. जज़ाकल्लाह गुलफाम आपके वक़्त का, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। आपका कोई तबसरा? Ji, Jazakallah. Qaid Saab is staring at me. I think he wants to take the limelight from us towards the player. So let's, I think the second innings is about to start. So we will leave it here. And let's see how Chino Cricket Club, are they able to defend this small target? That's the big question. मैं इसको मुख्तसर रखूंगा। गुलफाम के मुंह से निकला है या उन्होंने समझते बूझते कैचेस विन मैचेस। अगर उन्होंने माहौल पैदा कर लिया, प्रेशर डाला, कैच निकले और उन्होंने उसको मटेरियलाइज कर लिया, दे आर गोना इन, बट इट डिपेंड्स। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। Low battery warning.
अस्सलाम वालेकुम नादरीन, चीनो क्रिकेट क्लब इस वक्त सेटल डाउन हो रही है, फील्ड सेट कर रहे हैं। उन्होंने दुआ और लंबी टीम मीटिंग के बाद ग्राउंड में आए हैं और कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर लेकर आए होंगे। देखना यह है कि क्या वो उसमें कामयाब होते हैं या टेक्सास टाइगर जो हैं अपनी गिरफ्त को जारी रखेंगे चीनो क्रिकेट क्लब पे। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या पहले 3-4 ओवर काफ़ी होंगे तस्वीर को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए, या आपका प्रिडिक्शन मैं लेना चाहूँगा? Jazakallah. I think this is a smaller target which could play in the minds of the batters. So it has to be seen if these batters are going to play the way they play, or they will just keep the target in their minds and will go in their shelves a little bit, try to take singles, doubles. But we know Sadat Saab is a very good, smart operator. If he can get these early 2 or 3 wickets in first 2 or 3 overs, we have a match in our hands, Nimat Saab. जी जज़ाकल्लाह। सादत आए, पहला बॉल उन्होंने लेग साइड पर ही तोहफा दे दिया है वाइड बॉल का, इस छोटे टारगेट में भी बहुत फयादी का मुजाहरा कर रहे हैं। इम्तियाज़ साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। मैं इम्तियाज़ साहब आपकी एक इनपुट लेना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, क्या हमें हर चीज़ के बावजूद भी ऐसी जगह के ऊपर, टर्फ के ऊपर क्रिकेट खिलाते रहना चाहिए अपने प्लेयरों को? और दूसरा बॉल जो है उन्होंने ऑन द लाइन किया, बैक टू बेसिक, मिड ऑफ पर गया बगैर किसी रन के। जी इम्तियाज़ साहब, टर्फ विकेट्स। जज़ाकल्लाह नेमत साहब, ट्रफ के ऊपर डेफिनेटली आपको क्रिकेट खिलानी चाहिए, विच इज़ एक नॉर्मल, मतलब जो क्रिकेट है। अबाउट दिस पिच एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थर्सडे वाले दिन जब पहला दिन टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ये विकेट जो है काफ़ी डिफरेंट किस्म की, वाज प्लेइंग डिफरेंटली और काफ़ी लंबे स्कोर हुए थे, 180 प्लस, और उसके बाद वो स्कोर चेज़ भी हुए। कल की जो बारिश हुई है उसके बाद इस विकेट का बिहेवियर जो है काफ़ी बदल गया है और इट्स अ वेरी लो स्कोरिंग गेम टुडे। और मेरे ख्याल में स्कोर जो है जितना लो टोटल ये है, इट कैन बी डिफेंडेबल अगर सही लाइन लेंथ के ऊपर और प्रॉपर पेस के साथ बॉलिंग की जाए तो। जज़ाकल्लाह इम्तियाज़ साहब। सादत अहमद अपना ओवर जारी रखते हुए, गली की तरफ बॉल आया, बगैर किसी रन के बैट्समैन सेटल हो गए हैं और व्यूअर्स कह रहे हैं जी कि उनको लोगो नज़र आ रहा है, क्या ये करेक्ट हो गया है यूट्यूब पे? जी 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 बेहतर हो गया है जी जी जी। सादत अहमद अपना ओवर जारी रखे हुए, तो मैं इम्तियाज़ साहब आप से मैं ये कहना चाहूँगा और ऐड कर, एक अच्छा शॉट है ये, बहुत ही उम्दा शॉट खेला है, स्ट्रेट शॉट था 2 रन्स के लिए। सईद बाजवा ने ये शॉट खेला था, स्ट्रेट शॉट, 2 रन्स मुकम्मल किए सीएस नाम में बल्लेबाजों ने। सादत अहमद अभी तक तो ब्लो आउट करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के विकेटों की तब्दीली के साथ जो स्कोर लो और ओवर, जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने फरमाया है, और ये बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, उन्होंने बीट किया है सईद अहमद को, एग्रेसिवली उन्होंने अपने खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। तो डॉक्टर साहब जो हमारे जो विकेटों का तब्दीली चल रही है बिहेवियर की, मैं भी एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ख़ास तौर पे जो तजर्बाकार प्लेयर हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे जल्दी एडजस्ट किया है साथ, और मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स भी उनको लर्न कर रहे हैं। और नाजरीन ये एक अच्छा बॉल था,
इतना अच्छा था कि बैट्समैन और कीपर दोनों ही बीट कर दिए हैं सादत अहमद ने, और 22 के 2 रन मेरा ख्याल मिले हैं। जी हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी भी जो हैं इस टफ विकेट की तब्दीली के साथ खुद को तब्दील कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपके पास छोड़ता जाऊँगा कि आपने जो एक ख्याल जाहिर किया था, मुझे लग रहा है इनकी ओपनिंग जो मैदान में उतारे हैं ग्लैडिएटर्स, इन्होंने एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं। सईद अहमद और कमर हुसैन, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। Jazakallah. Nehmat Saab, yes, I think both these batters are aggressive by nature, Kamar Hussain and Saeed Bajwa. They like to feel bad on the ball, ball on the bat, I should say. And if you are able to get some dot balls out of them, I think they have a tendency to play rash shots, but they're gonna go play their shots and try to stay aggressive. I think that's the right approach. One good over, two good overs, and the pressure is back on Chino. Talking about aggressive batting, I have a very aggressive batsman with me who has played aggressively. I've seen him play really aggressively in this tournament before. I would like to take his opinion. एहसान भट्ट साहब, एहसान साहब, आप क्या कहेंगे अभी तक सो फार इस फाइनल के बारे में? जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ये जो मैच है फ़िलहाल ये तो 99% नज़र आ रहा है फ़िलहाल टेक्सास के पास, और उन्होंने अपने बैट्समैन भी वही दोनों भेजे हैं जो अग्रेसिव खेलते हैं, और मेरा ख्याल कहता है ये अच्छा फ़ैसला है उनका कि वो जाके अटैक करें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब हमारे पास टारगेट कम होता है तो हम कहते हैं कि हमने बस विकेट पे जाके स्टे करना है, और उसमें अगर विकेट्स निकल जाएं तो फिर टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो अगर वो 2-3 ओवर ऐसे ही खेलते हैं एग्रेसिवली, जिसमें से एक ओवर भी अगर अच्छा खेलते हैं, तो वो बाद में आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और मुझे नज़र आ रहा है जो जहाँ तक कि ये टेक्सास ये 10 या 12 ओवर में चेस कर देगी, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी चले, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह फॉर योर इनपुट। जब आप एग्रेसिव बैटिंग की बात करते हैं तो आप का क्या माइंडसेट होता है एज एन एग्रेसिव बैट्समैन? आप यू थिंक ऑफ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, या आप प्रेशर डालना चाहते हैं बॉलर पे, और यू ट्राई टू गिव योरसेल्फ टाइम? आई नो यू लाइक टू गो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, लेकिन और before we take the answer of this question, a good length ball which should have been played on the front foot. Saeed Bajwa Sahib tried to cut it, and this is the risk and reward when you try to play positive, aggressive. Then the tendency there is a risk of losing your wicket as well. तो एहसान साहब, आप क्या कहेंगे कि एज एन एग्रेसिव बैटर पहली बॉल से ही शुरू हो जाना चाहिए, या अपने आप को देनी चाहिए कुछ बॉल्स? जी डॉक्टर साहब, वैसे तो जाके वहाँ पे अपना टाइम लेना चाहिए विकेट पे, बट मेरा माइंडसेट ये होता है कि अगर मैं फर्स्ट बॉल से अटैक करूँगा बॉलर पे तो दैन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से मेरी ये होता है कि मैंने जाके अटैक करना है कि मैं बॉलर को परेशान कर सकूं। तो बाकी सम टाइम ये होता है कि वो क्लिक हो जाता है, और सम टाइम आप आउट भी हो सकते हैं। लकीली मैं जितने मैचों में न्यू जर्सी के साथ खेला हूं तो वो मेरा क्लिक हो गया जिसकी वजह से मुझे उन्होंने टीम में रखा हुआ है। Mashallah. Keep playing well, and keep playing aggressive, and keep entertaining all of us whenever we play against you. We enjoy your batting, even if you are hitting big sixes against us as well. So having said that, Texas has lost their first wicket, but we know they bat deep.
Saeed Bajwa has given his wicket away, and new batsman is Adil Ahmed, who again is aggressive by nature. A wide ball, Rehan Saab will have to get the right areas. On a low scoring game, you cannot afford to have these extras. The best plan is to keep putting the pressure, keep cutting the singles, obviously no boundaries. I'm looking forward to how Qamar Hussain Saab plays in this innings. Um, huge responsibility as an opener and expectation. The expectation is that he's going to perform and tries to play this on the front foot. I think inside edge, hit on the pad, no run. Rehan Sahib has been bowling good in this tournament, hitting the right areas. Of course, him being a left-hander is helping him. A different angle. He has good control. Short run-up, not too fast. A medium pacer. Tries to hit the length in good areas. Brings the ball back a little bit if the conditions allow. So he comes in. Adil is facing, comes in, and tentatively played on the front foot because the length was good. It's a good start by Chino Cricket Club. They have already taken one wicket. Saeed Bajwa Sahib is back in the pavilion. And Adil and Qamar Hussain trying to build a partnership here. Rehan Saab comes in. Good length ball, but on the leg stump. And a direct throw could be fatal for Qamar Hussain here. A risky run, but a good throw by Gulfam. As I was mentioning earlier, Texas bad deep. They still have Danial Ahmed padded up. Asad Basra is their good batsman. Noshirwan is their captain, who normally opens, but I think that he has dropped himself down. Comes in, outside off, looks like it's a wide ball. Umpire agrees with us and has given this a wide. Also, Zia Sheikh has been batting well in this tournament. Not only he's been bowling well, but batting well. So one wicket is not going to cut Chino Cricket Club. If they want to put pressure on Texas, they will have to take a few more wickets here. Rehan Saib comes in, and a good length ball, but again on the leg stump. Umpire calls it a wide. I think Qamar is itching to play a big shot. The kind of batsman he is, he likes to play those shots. And if Chino can keep him quiet, this will go in their favor. Try to cut this ball a little too close to the body. And the over is bowled, 12 for 1. Qamar Hussain is still batting. With him is joined by Adil Ahmed after Saeed Bajwa was bowled by Rehan Ahmed. Except for the extras, this was a good over. Up until now, what do you think how Chino's performance has been? I was expecting them not to give these extras, but what do you think? जी डॉक्टर साहब बहुत ही जो लापरवाही वाली अप्रोच के साथ आ रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे बिल्कुल भी. हालांकि विकेट मुझे पता है कि नहीं हेल्प कर रही, तो हेल्प ढूंढनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी. और
फील्ड जो है वो सेट करके उसके मुताबिक उनको बॉल करवाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे, फिर बात बनेगी। नहीं तो इस छोटे स्कोर के साथ ये एक्स्ट्रा जो हैं फाजिल रन जो हैं वो फ़ायदा नहीं देंगे। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बाउंस कम से कम हो रहा है मुसलसल विकेट का, और लेकिन चीनो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ही नहीं कर रही कि टेक्सास के बैट्समैनों को मुश्किल पैदा हो। एक दो बॉल डाट करते हैं तो 2 वाइड भी दे देते हैं साथ। सो देखते हैं आगे मैच को। दूसरा बॉल करवाएंगे सादत, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आए, वाइड का इशारा देंगे और अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। अभी तक तीसरा ओवर है, 7 या 8 वाइड रन दे चुके हैं चीनो वाले। ये इस लो स्कोर पे 2 ओवरों का स्कोर बनता है जो उन्होंने थ्रो अवे कर दिया है। 13 रन हो चुके हैं। सादत अहमद तैयार हैं अपना अगला बॉल करवाने के लिए अदील अहमद को, और ये एक अच्छा बॉल था, ये एक अच्छा बॉल था, लेकिन वाइड हो गया। लेकिन अच्छा बॉल इसलिए था कि अदील अहमद इसको खेलने गए थे, खतरनाक साबित हो सकता था। सादत अहमद ने अपना अगला बॉल किया, विकेट्स में था और पॉइंट की तरफ बॉल आया। फील्डर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं बना। सादत अहमद अपना ओवर का अगला बॉल करवाने रन अप पर पहुंच चुके हैं जी। अदील अहमद ने स्टांस लिया था, फिर खड़े हो गए हैं, कोई दोबारा तैयार है सामना करने के लिए सादत का। आए गेंद की और ये एक अच्छा बॉल था, अच्छा बेहतर बॉल था पहले की निस्बत। आखिरी 2 बॉल अच्छे करवाए हैं सादत ने। 2-3 वाइड करवाने के बाद ही इज़ कमिंग बैक, लेकिन 3 वाइड काफ़ी हैं क्योंकि 3.67 का जब रन रेट चाहिए हो तो 3 वाइड के बाद बैट्समैन कहता है मुझे क्या ज़रूरत है स्कोर करने की, खुद ही दे रहे हैं। तो देखते हैं सादत फिर आए, ये फिर उन्होंने अच्छा बॉल किया है, बैक टू बेसिक। लेकिन ये फील्डिंग में बहुत लीनियर्ड है। टेक्सास ने डॉक्टर साहब जैसा कि आपने भी नोट किया था, और टेक्सास जो सिंगल्स नहीं दे रहा था, चीनो जो है वो फैयाजी के साथ वो सिंगल रन्स दे रहे हैं वाइड के अलावा भी विद इन द सर्कल, दायरे के अंदर। तो अच्छा इस वक्त भी मुझे हावी नज़र आ रहे हैं टेक्सास के बैट्समैन, और उनको कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही इस छोटे टोटल को, छोटे स्कोर को हासिल करने के लिए, और हर गुजरते गेंद के साथ फतह के करीब होते जा रहे हैं। तो सादत अहमद अब बॉल करवाएंगे कमर हुसैन को। उन्होंने ये फुल टॉस बॉल कराया और फाइन लेग ने बहुत अच्छा फील्ड किया है। बॉल तो बहुत ही लूज था लेकिन फील्डर ने सादत अहमद को कवर अप कर दिया है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन इस असना में बल्लेबाजों ने बना लिया है। अदील अहमद अब स्ट्राइक पर आ गए हैं और सामना करेंगे सादत अहमद का। सादत अहमद अभी तक ब्लो नहीं कर सके, विकेट नहीं हासिल कर सके। अमूमन वो पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट ले लेते हैं। सादत अहमद अदील को बॉल कराएंगे। अच्छा बॉल था। अदील अहमद मुसलसल बहुत संभाल कर खेल रहे हैं, बहुत एहतियात से खेल रहे हैं, मुझे बड़े तवज्जो के साथ खेल रहे हैं। मुझे वो नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वो स्कोर ख़त्म करके जाएं, जो एक अच्छी हिकमत अमली है। और एक माहिर बल्लेबाज को, माहिर खिलाड़ी को यही करना चाहिए कि जब वो मैदान में उतरे तो खेल को ख़त्म करके जाए। ये भी एक अच्छी और बहुत ही उम्दा सलाहियत मानी जाती है खिलाड़ियों में। तो इस तीसरे ओवर के अख्ताम पर बहुत सारी वाइडों के साथ 17 रन्स पर पहुंच चुके हैं टेक्सास टाइगर, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। अब अगला ओवर करवाने के लिए मलिक रेहान खान तैयार हैं अपने रनअप पर, और कप्तान उन्हें कुछ समझाने आए हैं। देखते हैं उनको समझ आती है या नहीं, ये आपको डॉक्टर साहब अपने तबसरे में बताएंगे और उनकी बॉलिंग बताएगी कि वो क्या कैसे कंट्रोल करते हैं हवा को। डॉक्टर साहब आप अपनी तबसरे के साथ रनिंग कमेंट्री पे ये भी बताइएगा कि क्या रेहान साहब को
हवा का रुख तंग कर रहा है जो इतने वाइड करवा रहे हैं? ओवर टू यू जी। जज़ाकल्लाह। इस सवाल का जवाब तो रेहान साहब खुद ही दे सकते हैं, बट नेमत साहब, आई थिंक the big question here is that when does Tariq Saab introduce spin here? He saw in the first innings that how hard it was to play the spin bowling. But so far we have not seen that the spin has been introduced. Rehan is bowling good line and length, but I think Nemat Saab, I think Chino's bowlers are trying to pitch the ball a little up. I think they're not using the wicket as much as they should be. It's just an observation. I think they're trying to pitch the ball up, but on this wicket, we have seen in the last over, Saadat Saab, the balls he bowled in the right areas, they were staying low, which were played nicely by Adil. Let's see, Rehan comes in and he bowls the ball short towards short fine leg area. No run. Four overs, we haven't seen any evidence of spin here. On a low scoring game, I think the spin has to be introduced right away. Tariq has been bowling really, really well. He may have to take the charge, lead from the front, take some wickets here. Rehan comes in. Oh, it's a nice ball, and is it pitching outside leg? I think it is. And I think umpire seemed to agree. The bowler is coming from left arm over the wicket. As long as it's not pitching in line and hitting in line, it cannot be a leg before. I think a good decision by the umpire. A single taken by Adil Ahmed. Good running between the wickets. Nemat Saab, I'm already seeing the difference that Texas, as they read the conditions well in bowling, they're reading the conditions well in batting. They're not trying to hit hard. They're trying to take singles, keep the scoreboard ticking, unless it's a bad ball. Rehan comes in, and this is a very nicely cut shot by Qamar Hussain on the back foot. Qamar is a good batsman. He plays the shots all around. Good on the front foot, good on the back foot. Plays well both against spin and fast. Aggressive batsman by nature. Good runner between the wicket. Overall good cricketer. On the other hand, Adil Ahmed has been in really good form in the whole tournament. Scoring fast runs, making runs for his team. Comes in. This was a good ball. I think this is the right length on this wicket. The ball is coming slow onto the bat if hit in the right areas. We saw in the first innings, Qamar Hussain bowled the right areas and was able to pick 4 wickets. Rehan Ahmed comes in and bowls a little outside off. An under edge by the batsman goes towards the keeper. The score is 22 for 1. 4 overs have been completed. Umpire seems to be having the most fun on the ground. He's side rolling, front rolling. Overall, everybody is enjoying the day. Looks like that a spin is being introduced. I think Tariq Saab agrees with us on this wicket. Spin is the way, as we saw in the first innings. And Tariq is a smart operator, leg spinner, but he bowls a little faster ones. He doesn't try to give too much air. Keeps it wicket to wicket. And he's replacing Saadat Ahmed. There is a small interruption in the game. Looks like Qaid Saab is trying to get an attention of the video crew, which was taken care of.
Nehmat Sahab, I think this is going to be a good match. Adil Ahmed, aggressive batter, and Tariq Saab, a good leg spin bowler. What do you say? डॉक्टर साहब मैं अपने आप को थोड़ा महदूद रखूँगा क्योंकि ये कमेंट्री जो है खिलाड़ी भी सुन रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह आप याद करें मुझे ये एक्सपोजर का फ़र्क लग रहा है। दानियाल ने जिस तरह अहमद रज़ी को आउट किया है वो इस मैच का बहुत ही उम्दा लम्हा है, मैं सालों तक याद रखूँगा। उन्होंने बड़े तरीके से उनको अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे करके मैं तुम्हें आउट करूँगा, एंड ही डिड इट। ये ऐसी चीज़ जो होती है वो आप बैट्समैन को ड्रैग करके ले जाते हैं अपनी पसंद की जगह पे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा इस वक्त तक। अभी तक टेक्सास ने उनको ड्रैग किया हुआ है अपने पसंद के मैदान में, और चीनों को समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट के बाद समझ जाएंगे। मुझे लग नहीं रहा कि ये इंटरेस्टिंग मैच होगा। टेक्सास इसको जल्दी ख़त्म कर देगा क्योंकि जो काउंटर स्ट्राइक में कमियां हैं वो मैं महदूद है, मेरी ऑप्शन में बोल नहीं सकता, तो वो हर कोई ऑब्ज़र्व कर सकता है जो क्रिकेट को समझता है। ये एक बड़ा फ़र्क है इन दोनों की फील्ड में, जो कि मैं समझता हूँ बैट्समैन को कोई दबाव ही नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। जी डॉक्टर साहब। Gee, a good point, but I think I saw Ata, who was keeping before. He took the gloves off, and I think he's going to operate on the other side. These 2, 3, or 4, or 5 next overs of spin bowling could decide this game, Nehmat Sahab. तो तारिक साहब इज़ ऑन स्ट्राइक। लेट्स सी, हम देखते हैं कि उनको फील्डिंग उनकी सपोर्ट कैसे करती है, और सामना करेंगे अदील अहमद। पहला बॉल उन्होंने अच्छी जगह पे पिच किया है, अच्छी लेंथ पर। अदील अहमद को थोड़ी ये नहीं है, तो ये फ़र्क है। मैं आपको बता रहा था चीज़ें जो हैं, बाज़ औक़ात आपका मंसूबा बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन बेदाग हो तो फिर आपको फल मिलता है, वगैरह नहीं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं अदील अहमद। टेक्सास टाइगर जो हैं वो जज़ाकल्लाह कह रहे हैं कि कमेंटेटर ने स्पिनर्स को लेकर आए हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं उनको मैं माइक देता हूं, वो कुछ इज़हार ख्याल करना चाह रहे हैं। और अदील ने ये दूसरा ब्लो किया है, चौका रसीद कर दिया है। फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं है, माहौल गर्म हो चुका है और तारिक को समझ नहीं आ रही गेंद कहाँ फेंकूं, फील्डर कहाँ लगाऊं। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं अदील अहमद। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I think Tariq Saab is trying to bowl a little too fast, which Adil likes, and good comeback by Tariq. I think we saw in the Nehmat Saab, we saw in the first innings, slower you bowl, better it is for the fielding side. I know you don't want to give these hints to the bowler or the batter, but this good comeback by Tariq Saab. I think Adil is getting away with 2 shots. The first one was middle, the second one was not so middle of the bat, but I think he needs to calm his nerves down a little bit, because a wicket here could put some pressure on Texas. Tariq Saab searching for the wicket. The only way they can win this game is by taking wickets. And Nehmat Saab, now I see there is a fielder standing on long off. What would you say? क्या किया जाए इस मसले का? अदील अहमद बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और काबू नहीं आ रहे हैं इस वक्त बॉलर्स के। अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, दिलकश स्ट्रोक खेले हैं उन्होंने, 2-4 रन, 1 डबल, और इसके साथ इस ओवर के अख्ताम पर स्कोर हो गया है 32। 1 विकेट के नुकसान पर चीनो इस वक्त रास्ता तलाश करते हुए
कामयाबी कहाँ पड़ी है, देखिए उन्हें मिलती है या नहीं। छोटी सी टीम मीटिंग जारी है और उसमें वो देख रहे हैं कि अगली हिकमत अमली क्या अपनाई जाए। और देखते हैं कि इसमें टेक्सास कामयाब रहता है या चीनो। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट ओवर इट्स ओवर टू यू। I think the whole Name itself, the whole over is too much. Too, I already feel like that I'm talking a lot, but I must say that I would give a lot of credit to Zia Sheikh here. I think in the first over he brought Texas ahead of the game, and I think you want to say something. माजरत खाऊँ डॉक्टर साहब, मुझे वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट आई है इंतज़ामिया की तरफ से, चाहे सही है या गलत हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें एहतराम करना है। चीनों की तरफ से दरख्वास्त या एतराज़ आया है कि हम कुछ ऐसे मशवरे दे रहे हैं अनजाने में जो उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हम मज़ीद मोहतात हो जाते हैं, उनको मौका ना दें स्केप गोट के लिए। तो ये मेरे ऑफिशियल आया है, तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। तो आप क्या कह रहे थे ज़िया साहब के लिए? प्लीज़ ओवर टू यू। Jazakallah, I'll go back to that first over with Zia Sheikh bowled. I would say that those 2 wickets, Chino could never come back from those 2 wickets. And after that, their spinners and Kamarusan, their medium pace bowlers, squeezed the innings and took all 10 wickets. Their batting was ordinary. The shots they played, which was controlled by Texas in the first inning. Rehan Saab starts in third over. The wide ball. 3 runs. Too many extras for a small total. Rehan Saab comes in. Well bowled and nicely played towards mid-wicket. Single. Kamarusan is running well between the wickets. Who is going to get that wicket for Chino Cricket Club? Over to you, Nemat sir. जी डॉक्टर साहब, मैं आपको याद होगा कि मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले थे, रिहान आए हैं इस वक्त गेंद करवाने, वेल जज लेफ्ट बाय अदील। तो बहुत अच्छा उन्होंने जज करते हुए गेंद को जाने दिया कीपर के हाथों में। तो मैंने आप एक बात कही थी कि कम से कम 1 साल तक तो ये ब्लो ज़िया का याद रहेगा चीनों को, मुश्किल है कि इससे बाहर निकलें। तो आपकी बात ठीक है कि उससे निकल नहीं सके। रिहान को मज़ीद कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखते हैं वो प्रोडक्ट्स की तरफ गया, फील्डर के हाथों में 1 रन इस ससना में बल्लेबाजों ने बनाया है। जी डॉक्टर साहब। Both these teams have played this tournament really well. They were undefeated in the initial rounds, deserving finalists. But this is where it matters. This is where bowler is a little frustrated because the fielder didn't walk in for the catch. Maybe it dropped a little ahead of him, but the bowler wasn't walking. A fielder wasn't walking. I apologize. So as I was saying, these 2 teams are the deserving finalists. They won all their games. Nicely bowled by Rehan. Outside off. Beaten by Adil Ahmed. Adil Ahmed is an aggressive batsman. He's fit.
He keeps a good keeper. He runs aggressively between the wickets. Overall, a very handy cricketer. Rehan Ahmed Saab comes in and bowls a good length ball. Very well. उनतालीस स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले का अख्ताम हो चुका है। 39 स्कोर कर चुके हैं और जज़ाकल्लाह। अच्छा, जी अभी 7वें ओवर का खेल शुरू हो रहा है और इसी दौरान में हमारे पास मुहतरम मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए वलीद सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुदामुल अहमदिया की तरफ से उनकी तमाम काविशें और मैनेजमेंट और इंतज़ाम के तहत ये टूर्नामेंट कामयाब टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनक़िद कर सके हैं, जहाँ पर हमने सेहतमंद सरगर्मी जो है वो की है। और मोहतमिम साहब की कल की तकरीर को भी मैं ताला बिनसरिल अज़ीज़ तरबियती पहलू उसमें होना चाहिए। तो मोहतमिम साहब ने कल मस्जिद में जो याद दिलवाया उस पे हमें अमल करना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, भाईचारे में इजाफ़ा हो। और मैं डॉक्टर साहब को अब माइक दूंगा ताकि एक हम आपको ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। Jazakallah. Mohsin Saab, would you like to briefly tell us what was the hard work behind this successful tournament? MashaAllah, the tournament is coming to an end. We are witnessing the final being unfold. So, would you like to give us a brief background on all the hard work you and your team has done to make this happen? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह for having me. जी, you are right that this event, the planning for this event started early in the year. So the first thing that any department in Majlis Khuda Ul Ahmadiyya does is that they spend time on preparing goals for the year. And those goals are first submitted to National Amla Sadasab for approval, and then they are sent to Huzuri Anwar Ta'ala bin Nasir al-Aziz. So one of the goals that Sehat Jismani Department of Majlis Khudam Ul Ahmadiyya USA had was to conduct sports tournament at different levels, and at national level we usually conduct tournaments in soccer, basketball and cricket, and inshallah we will be conducting events, national events for other sports as well. However, the planning started early tournament, and
team was formed, Shakil Saab and Zia Saab and Mohit Saab, they have been looking for the relevant location in Dallas, in Atlanta, in New Jersey, and in other places. And we have been trying to find out a suitable location that suits our needs and that suits the calendar of Majlis Khudam Ahmadiyya USA and Jamaat Ahmadiyya USA. A couple of months ago, Shakil Saab and Mohit Saab and other team members to Etamad department to see that if we can hold an event on these dates, and then the work started for planning and for collecting the finances. In a sporting event, one of the most important aspect is that most of these events are being held outside of our mosques facilities, which is why they tend to, when you compare them with other events, or when you try to compare the amount spent for the total number of khuddam or players who are engaged, or the total, or you compare the number of dollars spent with respect to the number of days that the event lasted. So it's very important to be diligent about spending Jamaat financial resources. So the first thing was to see that how we can control and how we can plan the financial aspect of this event in a better way, and also to see that how we can collaborate with Jamaat departments and with other auxiliaries. And as Murabi Sahab was sharing earlier last night, that Khilafat is our lifeline. And this is only because of Khilafat that we have Majlis Khudamul Ahmadiyya USA or any Majlis Khudamul Ahmadiyya all across the world. And we have Majlis Ansarullah and we have Jamaat. So Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu was a visionary, that he made all of these organizations and these departments 100 years ago, and we are reaping the fruits of that hard work and that planning. And today it's because of Khilafat, from where all of these departments and auxiliaries seek, and Sadr Majlis Ansarullah USA and Naib Sadr Saab Hadi Saab as well. So Sadr Saab Majlis Khudamul Ahmadiyya and Sadr Saab Majlis Ansarullah coordinated and discussed different aspects of this event during Jalsa and after Jalsa, and continued doing that. And financial aspect of this event, and this event, and mentioned that this is the teams are usually comprised of both Khuddam and Ansar, and conducting these events in a joint operation will benefit both Majlis Khudamul Ahmadiyya and Majlis Ansarullah. Jazakallah. Meanwhile, the score has gone up to 49. Majlis Khudamul Ahmadiyya, Majlis Ansarullah, and Jamaat Atlanta. The way everything has been conducted, I congratulate you for conducting a successful tournament, which is now at its end, and we are witnessing the final. Jazakallah again. Sure. We also have Shakil Ahmad Saab, Nazim Allah Saab of this tournament. So I'll hand over the mic to Nemat Saab to ask him about this tournament, which they conducted very, very successfully. जी जज़ाकल्लाह शकील साहब, सबसे पहले तो आपने जो मजलिस खुदामुल अहमदिया की तरफ से
पूरी टीम को जो आपने उनको लीड किया है, उनकी रहनुमाई की और ये कामयाब टूर्नामेंट का इनकाद हुआ। नाजरीन, एक बहुत बड़ी अपील है, मलिक रेहान खान विकेट पर लेट ही गए हैं, लेकिन अंपायर कह रहे हैं ये ऊंचा लगा है। मुझे नहीं पता घुटने से नीचे ऊंचा कैसे होता है, लेकिन लगा है, अंपायर ने कहा है। तो रेहान खान बजा तौर पे लेट गए हैं क्योंकि अंपायर का इशारा ऊंचे का है, कुछ और होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त रेहान खान बहुत ही उदास हैं कि उनको ये विकेट नहीं मिल सकी और कमर जो हैं वो इस बहुत सख्त अपील को सरवाइव कर गए हैं। अच्छा बॉल करवाया था, लेकिन रेहान खान अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए, लेकिन अब जज्बा वो नहीं रहा, थोड़े से डाउन शोल्डर हो गए हैं। काफ़ी मेहनत से गेंद करवा रहे थे, उनको लगता है कि वो विकेट के हकदार थे। ये बॉल वाइड गया है। नो जी, मुझे बताया गया है कि रिप्ले में हाई ही लग रहा है, मैं मान लेता हूँ। और जज़ाकल्लाह। तो हम शकील साहब वापस आते हैं कि आपकी सरबराही में जो टीम ने ये माशाल्लाह इतना अच्छा टूर्नामेंट इवेंट का इनकाद किया है, तो आप मैं अपनी मर्ज़ी जो ख्वाहिश का सवाल पहले रखूँगा, क्या आप समझते हैं कि आगे आइंदा जल्दी हम मज़ीद ऐसे टूर्नामेंट देखेंगे? और नंबर 2, आप कुछ हमारे रोशनी डालें कि इसमें क्या आपको कोई मुश्किलात पेश आईं जिसमें कि हम प्लेयर्स जो हैं खेलने वाले वो आपकी मदद कर सकते हैं कि आप उन पे काबू पा सकें और मज़ीद आपको सहूलत हो जाए। 2 सवाल, अगला टूर्नामेंट और मुश्किलात। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह नेम साहब आपका। सबसे पहले तो आपने जो मेरे से पहला सवाल किया है कि आइंदा टूर्नामेंट इंशाअल्लाह हम लोग इसी तरह नेक्स्ट ईयर भी मस्जिद खुदामुल अहमदी के तहत इस टूर्नामेंट को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इसमें किस मुश्किलात का हम लोगों को सामना करना पड़ा है, उसके लिए मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत अरसा से हम लोग इस तरह की क्रिकेट को मिस कर रहे थे। क्योंकि जब भी हम लोग यूके जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस को हम लोगों को हैंडल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना था हमारी टीम को। तो इसलिए इस तरफ हम लोगों ने मजलिस खुदामुल अहमदी सर साहब खुदामुल अहमद से ये बात की गई, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि इस कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि इस तरह का अगर कोई आपको फैसिलिटीज़ मिलती है तो हम लोग उस पर जाएं। लेकिन में फाइनेंशली प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको फाइनेंशली तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो उस हवाले से हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात आई, लेकिन मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मजलिस खुदामुल अहमदिया और मजलिस अंसारुल्लाह USA ने हम लोगों का इसमें भरपूर साथ दिया है। और उसके साथ साथ जो अटलांटा की लोकल जमात है मस्जिद खुदामुल अहमदिया की, उसने हमारा इसमें बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ये अपना टूर्नामेंट सक्सेस कर सकें। जी नाजरीन, ये एक ऊंचा शॉट खेला है आदिल अहमद ने 6 रन के लिए कि 6 रन के लिए, और अपने टारगेट के मज़ीद करीब हो गए हैं। तो हम वापस आते हैं शकील साहब के साथ, हमारी जो हमारे नाज़िम आला हैं इस टूर्नामेंट के। मैं शकील साहब चाहूँगा कि आप क्योंकि मैं बताते ख़ुद बहुत मुतासर हुआ हूँ, उनका जो अटलांटा ने खाना बहम पहुँचाया है सबसे ज़्यादा टॉप पर उनकी ये सर्विस, बाकी भी बहुत ही लंबी फहरिस्त है। और गर्म खाना जबकि पक कहीं और रहा है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप चंद लाइनें, चंद अल्फाज अटलांटा के लिए सिर्फ कहें। बहुत ही अच्छी उनकी जो खिदमात हैं। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह नेमा साहब, मैं उसी बारे में आपको कह रहा था कि सबसे पहले मैं जो कायद साहब एटलांटा हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और उनकी जो ज़ियाफ़त की टीम है ऑडियो वीडियो के जो सेक्रेटरी साहब हैं नेशनल फ़हीम साहब, उनसे बात हुई तो फिर हम उन्होंने कहा कि ये कर सकते हैं, तो फिर हमने उस हज़रत साहब से इसकी इजाज़त ली, बाकायदा फैक्स की उनसे इजाज़त ली कि हम इस लाइव स्ट्रीम को दिखाना चाहते हैं। तो जब उनकी तरफ से इजाज़त आ गई रिटर्न में, तो हम लोगों ने फिर जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी फ़हीम साहब, उनसे बात की और उन्होंने हमारा इस चीज़ में भरपूर साथ दिया। उनके साथ साथ उनकी जो टीम है लोकल एटलांटा की टीम, उन्होंने उनके साथ भरपूर ताउन किया, और हम लोग अचीव कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों ने अचीव किया। और अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन से बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुनने में आया जी 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो हमारी लाइव स्ट्रीम्स पे आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और नाजरीन और सामीन, इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 59 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं यहां पर जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगा मोहतरम शकील साहब का, जो कि नाज़िम आला थे, और मैं तवक्को रखता हूं और ख्वाहिश रखता हूं कि वैसे कई टूर्नामेंट जो हैं वो मुनक़्क़िद करवाएं और हम सब उनसे भरपूर लुत्फ़ उठाएं और एक सेहतमंद सरगर्मी जो है वो जारी रहे। जज़ाकल्लाह शकील साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी टीम को भी भरपूर अजर से नवाजे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब शकील साहब से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी शकील साहब, congratulations again on conducting a successful tournament. It's very clear that there's a lot of work goes in the background, as Zaimi Al Saab has mentioned. Muntasim Saab has mentioned that the work starts from the beginning of the year. So I congratulate you and your whole team, Majlis Khudamul Ahmadiyya and Ansarullah. But I will, Nemat Saab, I will shift a little gears towards cricket, because Shakil Saab is a cricketer too. So I would like भी कर चुके हैं एज ए कैप्टन। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, प्लेयर्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में, उनकी फ़िटनेस के बारे में, हमारे जो जिन प्लेयर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, आप 3-4 दिन से उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अब हम फाइनल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मैं 1 से 2 बातें बस अर्ज़ करूँगा कि हमारी जो क्रिकेट के हवाले से जिन जिन चीज़ों का मुश्किलात है, उनमें से एक फ़िटनेस लेवल का बहुत इश्यूज़ है। अगर हम लोग उस पे वर्क करना पड़ेगा अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर साल हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए की जो टीम है वो यूके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, और वो भी टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन का होता है। और यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो ये है कि हम लोगों के जितने भी प्लेयर्स हैं वो हम लोग एक एरिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बहुत दूर दूर से टीम्स जो है ना वो शिरकत करती हैं। जब एक टीम इंटरनेशनल बनती है तो
उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसी का सामना रहता है कि क्योंकि हमारी 52 स्टेट्स हैं, तो हम लोगों को वहाँ से लड़के लेने पड़ते हैं और फिर एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है। और फिर जो दूसरा इशू जो आता है वो हमारी फ़िटनेस का है, क्योंकि हमारे फ़िटनेस इतने उस लेवल की नहीं है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे हम लोग दूसरा ये जो हमारे जो क्रिकेट पिचेस का जो था, ये भी बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम था कि जो हम लोग क्योंकि यहाँ पे यूएसए में आस्ट्रो टर्फ ज़्यादा खेली जाती है बनस्बत दूसरी के, तो इस दफ़ा इसी मकसद के लिए ही हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हम लोग इस तरफ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर सक्सेस भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये 2-3 चीज़ें हमें हैं, इन पे हम लोगों को अमल करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने इंटरनेशनल जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। Jazakallah, Shakil Saab, thank you very much for giving us the input. And we would like to congratulate you again on conducting this successful tournament. And we're looking forward for this next year, as you have mentioned and Munsim Saab have mentioned. So congratulations and good luck for the next year. Coming back to the score, 64. Out to be a one-sided affair here. I think Chino, as we were expecting them to fight, we haven't seen that fight so far. जी डॉक्टर साहब, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं इनकी फील्डिंग में परफॉर्मेंस देख के कि बदकिस्मती से मतलब ये चीज़ अब नज़र आ रही है, दे गेट इनटू द ग्राउंड नॉट विद द शोल्डर्स अप 100%. A little they were down. And second thing I would like to add, और ये एक ऊंचा शॉट था, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान गया था, बल्कि स्क्वायर लेग पर ही गया था जो कि ड्रॉप हो गया है। और मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब, वो शकील साहब के साथ कमेंट पे मैं ऐड करूँगा कि फ़िटनेस बिल्कुल अच्छी बात है। फ़िटनेस जो है वो टर्फ क्रिकेट में ख़ास तौर पे 2 तरह की होती है। एक जहनी फ़िटनेस होती है, जो आप कंसंट्रेट करने की आदत जब हमारे खिलाड़ियों को पड़ती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे बैट्समैन, अदील देखें इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज़िया ने किया है, ये उनकी जो और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, तो वो जब एक उनकी हैबिट बनती है, वो उनको फिर ड्रैग करती है कि मुझे फ़िट भी होना है। तो अगर हम टर्फ पे खिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िया की तरह और भी 1-2 मिसालें हैं, हमारे लड़के जो हैं वो फ़िटनेस की तरफ भी जाएंगे, और जो ज़हनी तरबियत होती है सब्र व तहम्मुल की और प्रोलॉन्ग करने की, जो कि हमें पहली इनिंग में हमें कमी नज़र आई, वो भी फिर पैदा होती है। तो वापस आते हैं, जैसे कि आपने कहा, मैच की तरफ। तकरीबन मुकम्मल हो चुका है ये एपिसोड और 71 स्कोर पर पहुंच चुके हैं टेक्सास टाइगर, और चीनो क्रिकेट क्लब के पास सिर्फ 9 स्कोर बचे हैं डिफेंड करने के लिए। मैं अब डॉक्टर साहब आपको माइक देता हूँ। ये वाइडिश लॉन्ग मिड ऑन की तरफ एक्चुअली बॉल आया, और 1 रन के लिए इसी असना में बल्लेबाजों ने दौड़कर, और अदील जो हैं वो कुछ मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, वो नीचे बैठ गए हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? I think Adil was looking for a glory shot when he pulled his hamstring. Looks like he's on the floor. He tried to swing his bat a little too hard and pulled his hamstring. We were talking about fitness here after 4 days of cricket. It's been shown on the bodies. Although Adil is one of the fitter players, but it's hot today. He needs to keep his players need to keep his hydration updated. So Texas team, someone needs to take water for him. I think I see someone trying to give him water. 72 runs for 1 wicket. Chino Cricket Club tried their hard to get the wicket here, but the only wicket they were able to take was 1. They needed more than that.
As we had mentioned earlier, they were a little short of runs, 50 runs short on this wicket. Anything over 120, 130 would have been a different ball game here. In the end, this has turned out to be a one-sided final, but both these teams are the deserving finalists. One thing which is noticeable is that there is more youth in the Texas team compared to the Chino Cricket Club, who has more senior players. So that may played a role here. I'm not sure. And this was a beautifully bowled ball by Arshad Sahib. Adil tries to go back and clip the top of off or middle stump. A good batting, a good innings by Adil. But I think Nemat Saab, it's a little too late here. जी डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, पार्टी इज़ ओवर और टेक्सास टाइगर जो है वो सेलिब्रेशन मोड में हैं और उन्होंने वो डिज़र्व करते हैं और बहुत अच्छा खेले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। चीनो क्रिकेट क्लब भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेली है, लेकिन अब मैं ये कहने में कोई आर नहीं समझता कि अगर उनके पास कोई प्लान था भी तो वो मुकम्मल तौर पे फेल कर दिया था। उनकी जो फील्डिंग में हिकमत अमली थी टेक्सास टाइगर्स की और फील्ड प्लेसमेंट उसके मुताबिक बाल करना। और मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा जिसको कि मैं ख़ुद भी एज अ क्रिकेटर बहुत पसंद करता हूँ। अहमद रज़ी को मैं बार बार जो कह रहा हूँ, वो ऐसा बैट्समैन है जो विकेट नहीं देता, बहुत ज़िद्दी बैट्समैन है। उसको आपने विकेट जैसे लेनी होती है तो उसके आप जो बाउंड्रीज़ हैं उनको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फिर मैं कहता हूँ दानियाल ने अपने स्पेल में ये किया और उनको फ्रस्ट्रेट करके उसने पुल किया और उन्होंने शॉट खेला और फिर एक बहुत उम्दा कैच कमर हुसैन ने पकड़ा। और फिर जो शुरू का जो ज़िया का ब्लो था पहले दूसरे ओवर में, फिर उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी कमर हुसैन ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल करके, और रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। तो आप सही कह रहे हैं कि तकरीबन अंजाम को पहुंच चुका है और टेक्सास जो है वो बजा तौर पर मुबारक के हकदार हैं, वो डिज़र्व करते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉलेसली यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जज़ाकल्लाह। Nemasab, you are also from Texas, but I see a new life in this Texas team. I see new players here. Beautiful pull shot. This was bowled short by Arshad Sahib. Zia run. Our new youngsters, some players have moved from New York State, which have strengthened their team. So overall, their team has gotten more stronger with the addition of these players. Played towards third man area. Zia Sheikh coming back for the second run, and I think the game is almost about to be coming to its end. But Nemasa, what would you say about this new look Texas team? I am impressed by their new look. जी डॉक्टर साहब, ये एक 7-8 साल लंबा सफ़र है माशाल्लाह, टेक्सास ने मुसलसल किया है इसको। और सबसे पहली चीज़ ये है कि टेक्सास में जो टेक्सन्स प्लेयर थे उनको शौक़ है खेलने का। तो मुझे याद है कि हमने जब टीम हमारी हुई थी मजलिस सेहत के इवेंट के बाद हमारी अपनी टीम बनी, और फिर हमने मजलिस सेहत से दरख्वास्त की कि आप खिलाड़ियों को इकट्ठा ना करें बल्कि मौका दें रीजन्स को खेलने में, और मुसाबकत का माहौल पैदा किया। और वो मुसाबकत का माहौल हमारे टेक्सास में अभी भी कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये काफ़िला इसी तरह चलता रहता है, लोग उसमें अपना हिस्सा डालते रहते हैं, और हमारे पास अब नया यंग ब्लड भी आ रहा है माशाल्लाह। और आप दुरुस्त कह रहे हैं
कुछ माइग्रेशन से भी हमारे पास 2-3 बहुत उम्दा प्लेयर आए हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और टेक्सास इस दफ़ा एक जो है मजबूत टीम बनकर उभरी है। और मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब प्लेयर्स आपस में तबसरा करते हैं तो मैंने जितने भी दोस्तों से बात की, एक ख्याल था कि टेक्सास में जो प्लेयर्स जो हैं वो स्टार्स थोड़े से ओवर क्राउडेड हो गए हैं, लेकिन मैं यहाँ दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अपनी लाइबिलिटी को होते हुए समझ सकते हैं कि वर्ल्ड 11 हमेशा एक लोकल टीम से हारती है। तो उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी जो हो सकती थी उसको ताकत में बदल दिया, और उसका सबूत यह है कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर अब खेल पेश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। Jazakallah Nemat. I think it's a very good point. I would like to congratulate the think tank of Texas team here, and the way they have brought themselves together, and they have added good, smart players. They have added fit players. They have added good cricketers in their team, and as historically we have seen that. Initially, when this tournament started, Nemat Saab headquarter was a good team. They won couple of tournaments, and then Virginia had been very strong team. I think they won 4 or 5 championships, and then recently New Jersey and Chino Cricket Club won a competition, and this Texas is an emerging champion. It's good for the cricket of USA. It's a healthy competition. It will or the next tournament, I may say. So overall, good for USA cricket, and overall good for all the USA players. With this single taken by Qamar Hussain, the scores I think are leveled. 2 more runs. I correct myself. 2 more runs required to win this tournament, which has been very successful under the Majlis Khudamul Ahmadiyya USA, with the support of Majlis Ansarullah USA and Jamaat Ahmadiyya Atlanta is coming to an end. The weather has been on our side, except for some rain yesterday, which did affect some of the games. But all in all, a very well conducted tournament. And I'm sure all the teams and all the players enjoyed the environment. And in the end, 2 best teams are finishing the finals here. Chino Cricket Club and Texas. In the end, this has been Nemat Saab, a one-sided final. Texas has been one-sidedly taken this game away from Chino Cricket Club. And I must say, Chino has played well in the tournament overall. जी डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त कहा है, और बिलाशुबा हर जो मौका होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, तो चीनों के लिए भी इसमें कुछ अपने मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स के लिए सबक मौजूद हैं। वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं माशाल्लाह, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां से उनका एक नया थॉट प्रोसेस शुरू होता है, उन्हें सोचना है कि उन्हें और क्या करना है, और दो मैंने एक्सपोजर का फ़र्क कहा था, उसके ऊपर उन्हें काम करना है कि स्पेशली अब मैं कह सकता हूँ फील्ड प्लेसमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इस पे मैंने देखा है कि उन्हें कुछ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो पेशेंस लेवल है अपने बैट्समैन का ख़ास तौर पे उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, चीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सिवाय एक मैच के, और टेक्सास उन पे सबकत ले गई है। और ये एक चीज़ देखने के काबिल है कि ये दोनों टीमें बग़ैर डिफीट के फ़ाइनल तक पहुंची हैं, और उसमें जो है टेक्सास इन पर सबकत ले गई है,
काफ़ी सारी बालों से तारिक साहब डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। 78 पे रोका हुआ है उन्होंने। काफ़ी लेट फील्डिंग क्लोज कर लेके आए हैं, लेकिन ले आए हैं आखिरकार। चलें, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो क्लोज फील्डिंग उन्होंने लगाई है इतनी देर से, इस पर आपका क्या कमेंट है? I think they're just this is their last step, I would say, but I think it's a little too late. But I just wanted to add one more thing, that this year we have seen Baltimore playing the semifinal. I think they played their first semifinal, so that is a team we should be looking forward to in the next tournaments. I think nobody was expecting them to play the semifinal. Similarly, the new headquarter team. I am saying new because this is a relatively newer team that has impressed most of the teams. So headquarters and Baltimore, who were two unexpected semifinalists for this tournament. Chino and Texas, most people were expecting them to at least play the semifinals, but I would like to congratulate Baltimore Falcons and headquarters team for qualifying into the semifinals as well. This ball is towards the leg side, swept by Kamar, and Zia is run out here. So, Nemat Saab, what would you say about those two emerging teams? जी डॉक्टर साहब, उससे पहले कि इमर्जिंग टीम, एक जुमले की आप मुझे इजाज़त दें। ये देखिए कि आपने जो बजा तौर पे कहा कि इट्स टू लेट, लेकिन अभी भी काम कर रहा है कि उन्होंने एक रन आउट फिर करवा लिया है फ्रस्ट्रेट करके। अब मैं आपकी उस दूसरी बात की तरफ चलता हूँ। बिलाशुबा हेडक्वार्टर जो है वो एक ओल्ड पुराने और नए खिलाड़ियों का एक अच्छा इम्तजाज था। ब्रेन और कुछ नौजवान खिलाड़ी, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और इसकी थोड़ी सी तवक्को भी उनसे की जा रही थी। बाल्टीमोर में आपसे इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी उनसे तवक्को नहीं कर रहा था, और उन्होंने ये सरप्राइज़ किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ डॉक्टर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे दोबारा, क्योंकि आप भी इस फेज़ से लंबा गुजरते आए हैं। टीमें ग्राउंड में बनती हैं और पवेलियंस में ख़राब हो जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी यूनिटी को अगले साल तक बरकरार रखें इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बगैर वो नहीं कर सकेंगे। तो फिर वो सेमीफाइनल से और भी आगे जाएंगे, क्योंकि वो जितना आपस में खेलते रहेंगे, वो 15-18 लड़के, उनकी केमिस्ट्री डेवलप होगी और वो एक टीम के तौर पर खेलना चाहेंगे। और नाजरीन, ये 22 के रन के साथ मुझे लग रहा है 2 रन मुकम्मल होंगे और टेक्सास टाइगर नासिर क्रिकेट टूर्नामेंट मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए के तहत मुनक़िद किया गया फाइनल में चीनो क्रिकेट क्लब को हराकर जीत चुकी है। 7 विकेटों के मार्जिन से टेक्सास टाइगर्स ने चीनो क्रिकेट क्लब को हराकर ये नासिर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करदा मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए, जो अटलांटा की क्रिकेट ग्राउंड्स में हो रहा था, उसको जीत लिया है। माशाल्लाह, दोनों टीमें मुबारक की मुस्तहिक हैं, लेकिन इस वक्त टेक्सास टाइगर जो हैं वो सबकत ले गए हैं। बजा तौर पर उन्होंने आउट क्लास कर दिया है चीनो क्रिकेट क्लब को, और बहुत बड़े मार्जिन से ये फतह समेटी है। और उनके इस परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे पास कोई और जो गुंजाइश नहीं बची। और चीनो क्रिकेट क्लब जो है, उनके पास सीखने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी हैं अपनी परफॉर्मेंस से, कि उन्होंने अपना फ़र्क जो है वो शो किया है कि हम आपसे बेहतर थे। तो मैं एक दफ़ा फिर उनके लिए माशाल्लाह कहूँगा और उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद टेक्सास टाइगर ने दोबारा जो है वो कप सिक्योर किया है अपने लिए। और मेरी तरफ से और तमाम टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद है। और मैं डॉक्टर साहब को इस वक्त माइक पेश करता हुए दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस पर कुछ अल्फाज जो हैं वो ज़रूर कहें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। Thank you, Nemat Saab. Jazakallah. Deserving finalists, but the deserving champions too. Texas has been relentless in this tournament played.
They should keep their heads up. Playing the final of this competitive tournament is an achievement on its own. Overall, Texas have been better in this final, but Chino tried their hard. But in the end, it was Texas Day, and they are the finalists. Thank you. जी, अब प्राइज सेरेमनी से पहले मैं इसको कंक्लूड करते हुए एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए को और अटलांटा की जमात को कि जिन्होंने असिस्ट किया मजलिस खुदामुल अहमदिया यूएसए को इस कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर, और अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर दे और आइंदा भी ऐसे टूर्नामेंट मुनक़िद करने की तौफ़ीक अता फरमाता चला जाए। तो अब हम प्राइज़ सेरेमनी तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।